Hello students, welcome to Unacademy platform. In this lecture, I'm going to give you class on polity and governance. And this will be a marathon session. And we are going to cover polity and governance part from basic to advanced level. Okay. And my basic governance and polity and governance class will be on YouTube. And advanced level classes on the same topic along with current affairs will be on special classes. Okay, तो आप वो भी देख सकते हैं. Welcome to Unacademy platform. This platform provides daily live classes, structured courses, live test quizzes, unlimited access on subscription. Okay, you can also download Unacademy learning app, which is available on both Google Play as well as Apple App Store. This is about me. This is my Telegram link and this is my Unacademy profile link. Along with me, these are the top educators on Unacademy platform, so you can watch their courses also. These are the structured courses. These are the different subscription plans. So for example, if you go with Plus, you have live classes, test series, unlimited practice and structured schedule. And if you choose Iconic, you also have this additional benefit of having a personal coach, daily means question answer practice, study planner, and personalized feedback. These GS subscription plans are available at 10% discount if you apply the code Amit PS. And these Iconic subscription plans are available again at 10% discount if you apply the code Amit PS. These are optional subscription plans available again at 10% discount if you apply the code Amit PS. Okay. Now this was conducted on December 20, and now UPSC Gamified is going on, and you can take part in that also, and you have this chance of winning the awards also. You have only 6 months to cover the course now, so we should devote it full time here for the preparation. This is the batch which is starting from 28th December. You can join the batch. So these are different batches which are starting: 6 months batch, 1 year batch, 2 years batch. Price hike is on the offering for Iconic subscription, so you can subscribe also. Okay, so let us start polity and governance. And here, as I said, that this is going to be a marathon session, and these marathon sessions will also come with different parts. Okay, so this is the first part of the marathon series that I'm coming out with. Okay, on polity and governance. I'll start from the most basic things and then I'll move to the most advanced level also. Okay, I'm also going to cover current affairs along with the static part, but advanced classes on this topic as well as current affairs will be available on special classes. Okay, so let us start. First of all, I would like to tell you about the sources that need to be covered for your preparation of polity and governance section. Okay, so it is both for prelims as well as mains. UPSC CSE examination. Okay, so the first source that you should cover is Subhash Kashyap. Here he has written 2 books. First is Our Constitution, and then second, Our Parliament. Both are very good books. Okay, then second, for some topics, for example, those things which are very important to cover and very important from examination point of view, for that you can have DD Basu.
Okay, especially starting 10 to 12 chapters, they are very important. Okay, so that will be very beneficial for you. But this is the static part for polity. Okay, governance issues also are covered somewhere in these topics, but on the governance part, I am going to provide in my discussion only. Understand that this static portion needs to be complemented with current affairs. Okay, and for current affairs, I would suggest you that you should go with Indian Express. Indian Express. Indian Express newspaper. In a way, for this particular section, this is better than the Hindu. Okay, this has been my experience. But this is better than the Hindu newspaper for covering this part. Okay, I have found Hindu better in coverage of environment and science and technology. But for this section, Indian Express is better in my experience. So I would suggest you to follow Indian Express. Then another very important thing I would suggest you to follow RSTV discussions. Very important. Okay, so this thing should be covered. So you should try to actually watch one or two videos daily of RSTV. Okay, which are available on YouTube. So this is regarding the sources which need to be referred for the preparation of this polity and governance part. Okay, now for mains, you should also regularly practice answer writing. Okay, and for answer writing, you can refer previous year questions. Previous year questions. Okay, for prelims part also, I emphasize on covering previous year questions because there you get a very good idea about the demand of UPSC, and that is very important for clearing an exam. Okay, so how do you know, how do you come to know that what is expected in this particular exam? That kind of clarity can be that becomes very clear. You can have that kind of clarity by covering previous year question paper. Especially in this context, you should cover papers from the year 2011 onwards. Okay, so 2011 onwards. 2011 के बाद जितना प्रीलिम्स हुआ है वो सारी की सारी चीजें सारे के सारे पेपर कवर कर डाले. एक चीज और याद रखिए यहाँ पास कि when you are covering previous year questions, especially for prelims, you don't have to focus much on answer part. Okay, because now answering the question will be easy, or you in some questions you find difficulty, but if you have studied polity, then it might be easy for you to answer the questions. But that is not what I'm emphasizing on. Why I'm emphasizing on previous year question is that you start analyzing the demand of the question paper. Okay, by analyzing previous year questions time and again, you will come to realize that there is a certain level of expectation UPSC has with respect to the demand, with respect to the requirement that this examination has. Okay, so with respect to the demand of the examination, or you can say the requirement of the examination, that kind of analysis of previous year question paper which is required here, that is going to be very useful. Okay, so here I would suggest you to go for multiple times. Okay, multiple times revision of previous year question paper. Okay, so when you come to know the answer of any particular question in prelims paper, that is actually the starting point of analysis. Generally you understand that if you have come to know the answer of any question, that is you consider it to be job done, but that is not the purpose here. Okay, start analyzing why this particular statement is incorrect, why this particular statement is correct. So that is something that you should be doing while analyzing previous year question paper. It's not about answering the question alone. Okay, real analysis of these questions, especially multiple choice questions in prelims stage,
is going to start when you are done, or when you know the answer. So knowing the answer is not the purpose. Analysis will start after you come to know the answer. Okay, then you analyze, or you start thinking that why a particular alternative is correct and why this particular alternative is incorrect. So that kind of analysis must be done. So once you cover these marathon sessions that I'm coming out with, then I don't think that you will be facing problem in any part of any static part of the polity. Okay, because I'm going to cover everything in detail here. But understand that even then it will be required on your part to cover previous year questions time and again. Okay, so while you are having marathon sessions, while you are watching marathon sessions, you might keep it for some other time also. This whole survey, these series is going to cover the whole syllabus, that is sure, because I'm going to cover all that which is required for this section. But at the same time, I would suggest you to attempt the questions of UPSC. Okay, then only you will understand the relevance of what I'm teaching here, and how good or how suitable it is. Okay, how necessary it is to cover all these things that I am going to teach here. Okay, so let us start now. We will start with the question that what is constitution? What is constitution? Okay, what is constitution? In response to this question, you can say that constitution is the most sacrosanct law of any country. Most sacrosanct. Okay, most sacrosanct law of any country. Now, what is the meaning of most sacrosanct law? The most sacrosanct law means that there are various kinds of laws in any country. So, for example, there is constitution. Then there are other laws which are framed by the parliament. Okay, then there are court rulings. Okay, there are customs, traditions. Okay, conventions. Various things are there. Okay, but constitution is supreme, or you can say the most sacrosanct law, in the sense that it actually sanctifies. You can say that any law derives its authority from the constitution. Okay, any law derives its authority from the constitution, or you can say any law which has not been given credibility by the constitution cannot sustain in the legal network, or you can say legal fraternity. Understand that if any law which has not been any law which has not been given credibility by the constitution cannot sustain. Okay, why it cannot sustain? Because constitution is the most sacrosanct law. It is actually, it becomes the foundation of providing legality to the other legislations, the other kind of provisions which are of the nature of law in the country. Okay, so anything which has any legal credibility, the source of credibility in that sense will actually be the constitution in any country. So that makes it supreme. Getting it? So there are various laws, in fact, in our country. Apart from the constitution, you have, say, for example, there is Indian Constitution.
Okay, because it is constitution, it becomes the most sacrosanct law. You can, this supreme law of the land. Okay, but then there are various laws. For example, Representation of People Act, then Citizenship Act. Okay, Hindu Marriage Act, Hindu Marriage Act, Special Marriage Act, Food Security Act, Indian Penal Code, Indian Evidence Act. All those laws are there. Okay, but all these laws, if they have not been given the credibility by the constitution, they will not be able to sustain in the legal network, or they will not be able to continue enjoying the legality. Okay, so it is a constitution which actually gives recognition, or you can say legal recognition, to these provisions or these laws. Even when you can say that many of the laws here, or many of the provisions, legal provisions, for example, Indian Penal Code, CRPC, and all that, they are actually, if you see the chronology there, they have been existing even before the Indian Constitution. That shows the importance of the Constitution here. Okay, so this is about the Constitution. Now understand again that Constitution is also called, you can say, the most fundamental and organic law of the country. Most fundamental and organic law of the country. Okay, two words here. The first word is fundamental, and second word is organic. What is the meaning of fundamental here? It is a fundamental law. Fundamental law means it is the most basic law. Okay, most basic law. So if it is the most basic law, then again, in that sense, it also becomes the foundational law. Okay, foundational law of the country. Getting it? But how the constitution is also organic? It is organic because constitution is called a living document. Living document. Understand how? How and why constitution is a living document, you can say organic law. Understand this point. Understand this point. See, understand how constitution is the organic law. Or you can say how it is, or you can say that how constitution is an organic law. In response to this question, you can say that constitution is a living document. Okay, living document. And because it is a living document, that is why it is called the organic law. Okay, and how constitution is a living document then? कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है भाई? ओके, इसको आंसर करते हैं. हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. Understand that if you study NCERT class 11th book, that is how the constitution works, there you have a very good statement about the constitution, that constitution reflects the
dreams and aspirations of the people. Okay, so constitution is actually the reflection of the aspiration of people. Getting it? But people's aspirations, or you can say people's dreams, they keep on changing. Getting it? They keep on changing. But if constitution is the reflection of dreams and aspiration of the people, then constitution should also be able to accommodate the changed aspirations and dreams of the people. Getting it? Constitution must be able to accommodate changed aspirations and dreams of the people. ये कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लोगों की आकांक्षाओं का, उनके सपनों का रिफ्लेक्शन है. लेकिन लोगों की आकांक्षाएं, उनके सपने, उनकी इच्छाएं ये चेंज होती रहती. ओके, अगर ये चेंज होती रहती है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका रिफ्लेक्शन है उस चेंज्ड सर्कमस्टांसेस को, या कहें कि चेंज इच्छाएं, जो बदली हुई इच्छाएं हैं, बदले हुए इरादे हैं, बदले हुए आकांक्षाएं हैं, उनको कैसे रिफ्लेक्ट कर पाएगा कॉन्टिन्यूस वे में? तभी जब वो अपने आप को चेंज करे. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन बाय अंडरगोइंग चेंज इन इटसेल्फ continues to accommodate the change in the aspirations and dreams of the people. And that change in the constitution, you know by this name, that is amendment. Okay, तो constitution क्या है? क्योंकि ये लोगों की चेंज होते एस्पिरेशंस, चेंज होती ड्रीम्स को एकोमोडेट करने के लिए अब अमेंड होता है. तो जिस तरह से लोगों की इच्छाएं, लोगों के सपने, लोगों की आकांक्षाएं जीवित है क्योंकि वो बदल रही हैं, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन भी एक जीवित, या कहें आप जैविक, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, क्योंकि वो उन चेंज होती हुई आकांक्षाओं को, सपनों को लगातार रिफ्लेक्ट करता रहता है. और ये कर पाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा. ठीक है, अमेंडमेंट के द्वारा. समझ रहे हैं आप इस बात को? सो दिस इज अबाउट व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन is the most fundamental law and why it is the organic law. I would like to elaborate more on this part, that why constitution is a fundamental law, why it is a basic law. That was my first statement when I said that any law, if it has to enjoy the legal credibility, should be sanctified by the constitution. Getting it? That makes constitution the basic law or the fundamental law. Because if any law is not getting, or is not given the credibility by the constitution, then that law will not sustain, or that law cannot sustain. समझ रहे हैं इस बात को? तो इस वजह से उसे क्या बोलते हैं? बेसिक लॉ या फंडामेंटल लॉ. और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की ड्रीम्स, उनकी एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन है, ये कहा जाता है. लेकिन ड्रीम्स और एस्पिरेशंस लोगों की चेंज होती रहती हैं. उस चेंज ड्रीम एस्पिरेशन को भी रिफ्लेक्ट करने के लिए, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पास वो कैरी करता है, उसे पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है. ओके, एक ढांचा देता है जहां से चीजें की जाएंगी और लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी. तो अगर वो इच्छाएं, वो सपने, वो आकांक्षाएं अगर बदल रही हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप को अमेंडमेंट के थ्रू बदलता है, या कहे इस तरह से कहा जा सकता है इसे कि अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है. ओके, ये पर्टिकुलर फीचर कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है. ओके, देखते हैं आगे. आगे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फंक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री में उस कंट्री की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर और उसका ऑर्गेनाइजेशन का एक फाउंडेशन देता है, या आप ये कहें कि इट एक्चुअली एस्टैब्लिशेस द रिलेशन between different organs of the state. In that sense, it provides the character, conception and the organization. The very structure of the government is actually given by the constitution.
ओके, इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, गवर्नमेंट का कैरेक्टर क्या होगा, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ये सारा का सारा कुछ कैसे पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन चाहे तो एक अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट तैयार करे, या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तैयार करे, या एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तैयार करे, या डेलिबरेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तैयार करे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तैयार करे। तो ये बहुत तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकता है गवर्नमेंट को, और बहुत तरीके की गवर्नमेंट्स को पैदा कर सकता है। उस सेंस में कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर, उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसके कंसेप्शन, उसके कैरेक्टर, इन सब चीजों को भी डिटरमिन करता है। ओके, कंसेप्शन का यहाँ पास मतलब क्या है? कंसेप्शन का मतलब है ओरिजिन से। ओके, ओरिजिन से। तो गवर्नमेंट का ओरिजिन क्या होगा उस सेंस में? कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर का मतलब क्या है यहाँ पास? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है डिजाइन, गवर्नमेंट की डिजाइन क्या होगी, ठीक है। और कैरेक्टर का क्या मतलब है? कैरेक्टर का मतलब है कि अथॉरिटेरियन होगा, कि डेमोक्रेटिक होगा, कि एब्सोल्यूटिस्ट होगा। ये चीजें कैसे पता चलेंगी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा। ओके, उस सेंस में कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या डिसाइड कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर रहा है कि गवर्नमेंट का ओरिजिन, फिर गवर्नमेंट का डिजाइन, फिर गवर्नमेंट का कैरेक्टर, ओके, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ कहां से डिसाइड हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, तो जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम पैदा किया, या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वी हैव come to adopt parliamentary form of government, where council of minister is responsible to Lok Sabha, or you can say parliament. Okay, Lok Sabha in general, parliament, Lok Sabha in particular, parliament in general. Okay, so that makes our system a parliamentary system. तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है? ये डिसाइड हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, तो ये चीज आप पता, मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हो गई। ओके, आगे देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के, या गवर्नमेंट के पावर के एक्सटेंट को भी डिसाइड करता है। इट डिसाइड्स द एक्सटेंट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिसाइड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। इफ इट इज डिसाइडिंग द ओरिजिन, द स्ट्रक्चर, द कंटेंट, द कंसेप्शन, okay, organization, then I don't think that it is surprising for you that it also decides the extent of the power of the government. Okay, it also decides how that power is going to be exercised. Okay, how that power is going to be exercised. That is also decided by the constitution. Getting it? Okay, so I have told you that constitution is the most sacrosanct law of the country. That is one point. Then constitution is the most basic and fundamental law of the country. Second point. Then constitution is the organic law, or you can say it is a living document. Okay, why it is a living document? I have explained it. Then I told you that constitution decides the structure, content, character, conception, origin. Okay, conception means origin of the government. Constitution also decides the power of the government, the extent of the power of the government. And then finally I said that constitution determines also that in what manner those powers will be exercised. Okay, getting it? Because of all these features, you can say that constitution indeed is the supreme law of the land.
ओके, जब इतना सब कुछ कर रहा है तो इतना सब कुछ कर तभी पा रहा है जब वो एक सुप्रीम लॉ है। ओके, इस चीज को समझिएगा। फॉर दैट रीजन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। गेटिंग इट? Because it is the supreme law of the land, and because every law in the country needs to derive, or you can say actually derives its credibility uh, by the constitution. For that reason, constitution enjoys, or you can say constitution enjoys special legal sanctity. Special legal sanctity. Okay, what is special legal sanctity? That it is the most important most important legal document. Most important legal document. Okay. Okay. So it enjoys special legal sanctity, which means that which makes it, or you can say through which it also becomes the most important legal document, or you can say the most pious legal document in the country. Okay. Now talk about the Indian Constitution. That one specific thing that you can say about Indian Constitution is that it derives its ultimate authority from the people. Getting it? So the power and the authority of Indian Constitution is coming from the people. Getting it? And this is most evident in case of preamble. Okay? Preamble. We the people of India. So that is most evident when you see the wordings of the preamble here, that it is the people or the Indian people who gives power and authority to the constitution. Getting it? Understand other functions also. So for example, you can say that this is the case with most of the constitution of the world, that constitution also regulates, you can say regulates or establishes the relationship between government and citizens. Government and citizens. Okay? Government and citizens. Now, this is most evident in case of, say, for example, in Part 4 of the Constitution. Part 4A of the Constitution. And also Article 326 of the Constitution. अभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारा चीज़ें बहुत अच्छे से कराई जाएंगी. ओके, इन्हीं मैराथन में मैं आपको ये सारी चीज़ आप ध्यान से सुनो और समझो बस. समझ रहे हो आप इस बात को? So constitution also establishes what kind of relationship it will be. That is also determined by the constitution. Okay. So this relationship is actually based on duties and rights. Rights and duties that citizens have in any particular polity. Okay. And duties that they have towards state, of which the government is just one pillar, and rights they can claim from the state. So that is actually the relationship that is established by the constitution. Getting it? समझ में आ रहा है? तो ये सारी बेसिक चीजें, सबसे बेसिक चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो आपको बता रहा हूँ. इट इज द मोस्ट बेसिक लॉ, द मोस्ट फंडामेंटल लॉ. इट इज ऑर्गेनिक लॉ. व्हाट मेक्स our constitution an organic law, that is all explained here. Okay. Then constitution also provides content, character, conception, organization, structure of the government. It also decides the power and the extent of power of the government, and also decides how that power is going to be exercised. Okay.
all that makes Constitution the most important legal document, or you can say the most pious legal document. For the same reason, it also enjoys special legal sanctity. ओके, तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको। अब हम सबसे बेसिक चीजें यहाँ पास फिर से कुछ जानते हैं कि हाउ इंडियन government actually functions. Okay, so the most basic things, for example, about Indian government is this, that we have adopted a parliamentary system, or you can say parliamentary form of democracy. ये भी बहुत ज़्यादा डिटेल में आएगा बाद में, लेकिन अभी समझिए what is the meaning of parliamentary form of democracy. This was actually the question in the year 2015 UPSC prelims. अब जाके देख लो, ये क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ समझिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर is accountable to people's house, or you can say in our case it is Lok Sabha, which is a part of parliament. Okay, so executives in that sense are accountable to parliament. That makes your system parliamentary form of democracy. If executives are accountable to parliament, that actually conveys a point here that executives are not all important, or they do not have overriding power over the parliament. Parliament can ask for their accountability, can demand accountability from executives. Okay, you can say that executive cannot circumscribe parliament. That can be said about it. Okay, so it is not possible for executive to circumscribe parliament in general in India. Okay, they are accountable to Lok Sabha here, and that makes our system a parliamentary form of government or parliamentary form of democracy. Okay, so what is parliament? Parliament क्या है भाई? Parliament in our case means three things, or you can say it consists of three institutions. Okay, what are those three institutions? First is Lok Sabha, the second is Raj Sabha, and the third is President. Yes, President is also considered a part of the Parliament, and the office of President, I don't think you would disagree, that is an institution itself. Okay, so understanding the parliamentary system here, you can say that this is the parliament, or you can say, you can draw it like this. That this is parliament, which consists of Lok Sabha, Raj Sabha, and President. Okay, you can draw it like that also. Lok Sabha, Raj Sabha, and President. Getting it? President. This is parliament. And where is the government? The executives, prime minister, as well as council of minister. You can say council of minister headed by prime minister. Council of minister headed by prime minister is somewhere here. Okay.
So there can be certain individuals in Council of Ministers who are from Raj Sabha, then there can be certain individuals in Council of Ministers again who are from Lok Sabha. And in our scheme, Prime Minister himself can belong to either Lok Sabha or Raj Sabha. Okay. So for example, if you recall, Manmohan Singh was from Raj Sabha and Prime Minister Modi is from Lok Sabha. Okay. Are you getting it? So this way our structure is designed by the Constitution. What I am trying to convey here is this, that government in that sense, or you can say executive here, are actually the very small part of the parliament as an institution. Getting it? An executive, that is the government here, is accountable to parliament. Getting it? Okay? Yeah. Executive, that is the government. And what is government? Council of Ministers headed by Prime Minister. This is the government. Yes? इन्हीं को तो आप गवर्नमेंट बोलते हैं. कौन प्राइम मिनिस्टर है, उनके मंत्री कौन है, अभी सबसे बेसिक चीजें हम सीख रहे हैं यहाँ पास. तो इन्हीं को तो गवर्नमेंट बोला जाता है. तो ये कहाँ का पार्ट है? ये एग्जीक्यूटिव आपके पार्लियामेंट का पार्ट है. ओके, तो आप समझ सकते हैं कि ये पार्लियामेंट है. दूसरा, अगर मैं कोसेंट्रिक सर्कल से यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये है गवर्नमेंट, ये एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं यहाँ पास. ये पार्लियामेंट है, ये एग्जीक्यूटिव, और ये एग्जीक्यूटिव इस पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल. ठीक है? तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, दैट एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट हियर. That is one point, and executive is accountable to parliament in general and Lok Sabha in particular. Okay, so that makes our system a parliamentary system. I think this is clear now. चलिए अब सबसे बेसिक चीज फिर से जानते हैं कि if this is parliament and this is executive, then how the government is formed in your country. Okay, so how, say for example, how government comes into being. Okay, because I told you that we are going to start from the basics and I will take you to the most advanced level in polity. Okay, अगर आप YouTube और स्पेशल क्लासेस दोनों को अगर आप देखेंगे तो बेसिक टू एडवांस में कवर करूंगा यहाँ पास. तो हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, समझो. हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन योर कंट्री, or you can say how PM comes into being, or how anyone becomes PM. That is a fair question here. So who becomes PM? देखिए ऐसा होता है यहाँ पास कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर या कंसेप्शन जो प्रोवाइड किया, वो बोला कि लीडर ऑफ द पार्टी हैविंग मेजॉरिटी इन लोक सभा फॉर्म्स द गवर्नमेंट. ओके, लीडर ऑफ द पार्टी हैविंग मेजॉरिटी इन लोक सभा फॉर्म्स द गवर्नमेंट. अभी आपने देखा था पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में अगर मैं समझिए कि प्रेसिडेंट को हटा दूं, या समझिए कि ठीक है प्रेसिडेंट को थोड़ा सा बाहर रखें, ये अगर इसको समझे कि ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है और ये प्रेसिडेंट, दिस इज पार्लियामेंट. गेटिंग इट? तो नाउ यू नो that there are, in Lok Sabha you have 545 member of parliament, and in Raj Sabha you have 245 member of parliament. Getting it? So you have 545 member of parliament here. So people actually elect, or you and me elect our member of parliament from our constituency. तो हम क्या elect करते हैं? member of parliament. ठीक है? तो member of parliament लोकसभा में directly elect होते हैं, और member of parliament जो राज्यसभा में है वो
इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, सारा कुछ बहुत डीपली आएगा आगे कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है। तो जिस इलेक्शन को आप जानते थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिनको बोला गया था कि 2014 में मोदी वेव है, 2019 में भी मोदी वेव है, तो वो इलेक्शन किसका था? वो इलेक्शन था जनरल इलेक्शन। ओके, अब इस जनरल इलेक्शन में क्या होता है? जनरल इलेक्शन में हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टी के होते हैं। तो कुछ हो सकता है कि कांग्रेस की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये बीजेपी की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दूसरी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सारे के सारे कहाँ जाके बैठे? लोकसभा में। अब जनरल इलेक्शन में जो जीता वो जाके लोकसभा में बैठता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको बोलते हैं सांसद। तो हम किन्हें चुनते हैं जनरल इलेक्शन में? हम जनरल इलेक्शन में चुनते हैं सांसदों को, ठीक है। अब सांसद जाके बैठते हैं लोकसभा में। और गवर्नमेंट कैसे बनती है? या प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है लीडर ऑफ द पार्टी हैविंग मेजॉरिटी, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे बनती है? पार्टी हैविंग द मेजॉरिटी इन लोकसभा, ये लोकसभा है, इसमें जो पार्टी मेजॉरिटी में आएगी वो गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। अब यहाँ पास पार्टी का मतलब क्या है? पार्टी का मतलब बीजेपी कांग्रेस बस नहीं है, पार्टी का मतलब अलायंसेस भी हो सकता है। ओके, पार्टी का मतलब अलायंसेस भी हो सकता है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ म्यूट है। Given constitution says that leader party having majority in the Lok Sabha forms the government, constitution does not envisage, or constitution is mute whether party would mean any single party or a coalition of party. Constitution doesn't elaborate on it. Getting it? So यहाँ पर सबसे बेसिक चीज यहाँ आपको जाननी है कि पार्टी जो लोकसभा में मेजोरिटी एंजॉय करती है वो गवर्नमेंट बना दे। प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? ऐसी पार्टी का जो लीडर होता है, ठीक है। कौन सी पार्टी का? जो लोकसभा में कॉन्फिडेंस एंजॉय करती है, ये लोकसभा में मेजॉरिटी रखती है, ठीक है। समझ गए आप इस बात को? तो इस तरह से माया गौर, तो हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते। प्राइम मिनिस्टर वो व्यक्ति होता है जो उस पार्टी को लीड कर रहा होता है जिस पार्टी की मेजॉरिटी है लोकसभा में। समझ रहे हैं? सिंपल बात है आपको, उसे बोलते, वो बनता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। फिर देखिए कि आपके यहाँ एमपीज और लोकसभा के होते हैं, एमपीज ऑफ लोकसभा, एंड दैट इज व्हाई ऑल्सो द गवर्नमेंट, ये क्या होते हैं? लोकसभा का इलेक्शन से डिसाइड होते हैं। Who will become the MPs in Lok Sabha, and now who will form the government? That is decided by the Lok Sabha election. Getting it? Because how the government is formed? I just told you that party having majority in Lok Sabha forms the government. Because of Lok Sabha election, it is through Lok Sabha elections we get member of parliaments in Lok Sabha. Now the party which will be having majority in Lok Sabha will form the government. Okay, so how the government is formed? It is through Lok Sabha election, general election. Okay, now you have this PM which heads Council of Minister. Okay, मंत्रिमंडल होता है, और ये मंत्रिमंडल जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, इसमें मिनिस्टर, सिंपल सबसे बेसिक चीज अभी कवर कर ले हम जल्दी से। मिनिस्टर कहाँ से होता है? लोकसभा से होता है कि राज्यसभा से होता है? आपकी कंट्री में, आपके सिस्टम में मिनिस्टर कैन बिलोंग टू लोकसभा also as well as Raj Sabha also. Not only minister, PM himself can belong to Lok Sabha also, or he can belong to Raj Sabha also. Okay. Now
PM is the leader of the party having majority in Lok Sabha. ठीक है? What about minister? Should he necessarily belong to the party forming the government? No, he doesn't need to belong to any party also. So minister in your case can be from opposition party also. एक अपोजिशन पार्टी का मेंबर भी मिनिस्टर बन सकता है आपकी कंट्री. ठीक है, सिंपल. आगे सिंपल चीज देखिए कि जैसे पार्लियामेंट है तो इन पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा का स्ट्रक्चर क्या है ये थोड़ा सा देखते हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज राज्यसभा, लोकसभा. टॉक अबाउट लोकसभा, you have 543 members, and those members are called member of parliament who are directly elected. Okay, directly elected. And 2 MPs are nominated members. So they are nominated. Okay. Now, those who are nominated actually belong to Anglo-Indian committee. Okay. And they are nominated by president. We are not going to detail here because I'm just giving the structure of the system here that we have. Okay, ये सारी चीजें बाद में डिटेल में भी आएंगी. फिर there is Raj Sabha, and Raj Sabha you have 233 members or member of parliament who are elected. They are actually indirectly elected. Okay, and there are, instead of 2 in Lok Sabha you have 12 MPs who are nominated. Okay, nominated. So total there are 245. Here they are 545. Getting it? So this way you have 545 members of Lok Sabha, in which 543 are directly elected and 2 MPs are nominated. Those nominated MPs belong to Anglo-Indian community. Now 233 members of parliament in Raj Sabha are elected, although indirectly, and 12 MPs in Raj Sabha are nominated. Okay. So I think this is clear. So this is the most basic understanding that you can have here. So if with respect to states, there you have legislative assembly, and some states also have legislative council. So all that will come under parliament, and we will cover the parliament chapter. ये सारी चीजें आएंगी. ठीक है. Next is, you know that Indian Constitution is a written constitution. ठीक है, written constitution. While you must be knowing that British Constitution, ये बोला जाता है यूके का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनरिटन है. तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है दोनों में? And how do we say that Indian Constitution is a written constitution? And why do we say that UK's constitution, because the British Constitution, is an unwritten constitution? What is the meaning of this unwritten constitution? Okay, this is something that we are going to understand. Okay, so let us see that. Now let us see the difference between written constitution and unwritten constitution. Written constitution and unwritten constitution. Understand that what is the meaning of written constitution? Written constitution means that constitution is codified, or you can say codified into a single document. Codified into a single document.
Okay, so by written here means that codification is there. And what is the meaning of unwritten constitution? Unwritten constitution generally are actually the set of laws. They are different set of laws, and these laws are prepared, have been given by Parliament, while written constitution is given by Constituent Assembly. Okay, if you consider the example, Indian Constitution is a written constitution. Indian Constitution is a written constitution. Then USA's Constitution is a written constitution. If you consider the example of unwritten constitution, you have the most prominent example here is UK. Then Israel. Israel's constitution is also unwritten constitution. Okay. What else? You can say that a written constitution is in a written constitution, constitution is supreme. Constitution is supreme. Getting it? Because why constitution is supreme? Because all the organs of the state, that is executive, legislature, judiciary, all these organs derive their authority or their powers from the constitution. If all these organs are deriving their power from the constitution, that will make constitution the supreme one. Okay, what about unwritten constitution? As I told you that unwritten constitution is prepared by Parliament. Okay, it is prepared by Parliament. Because constitution is the product of the Parliament, then the constitution in that sense will be deriving the authority from the Parliament, and that makes Parliament the supreme body here. So it is not the constitution which is supreme, it is a Parliament which is supreme here. Or you can say that Parliament is supreme, and because Parliament is supreme, that is why it is actually crafting, you can say, crafting the constitution. Parliament is crafting the constitution. That will make Parliament the supreme body. Okay, Parliament is not deriving the power. You can say that Parliament in unwritten constitution, Parliament is not deriving the power from the constitution. Because Parliament is not deriving the power from the constitution, or in that sense, because constitution is the product of the Parliament, because it is the craft, you can say, of the Parliament, that definitely makes Parliament the supreme body. And that is why in UK you have Parliament to be the supreme body. So which is which organ, okay, which body is supreme here in UK? Parliament. Okay, so there is parliamentary sovereignty there in UK. पार्लियामेंट सोवरेनिटी कहाँ एग्जिस्ट करती है? यूके में. एक बार फिर से समझिए, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, कोडिफाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ओके, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये जो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है, ये अपनी अथॉरिटी डिराइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से. जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली रिजल्ट है, एक क्राफ्ट है, एक प्रोडक्ट है पार्लियामेंट का. व्हाई? बिकॉज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द सेट ऑफ लॉज गिवन बाय पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का प्रोडक्ट हुआ एक तरह से, पार्लियामेंट मदर हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की. तो उस सेंस में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कैसे हो जाएगा? उस केस में कौन सुप्रीम होगा? पार्लियामेंट. तो यूके में पार्लियामेंट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. Next thing, a very major difference that exists between
the written constitution and unwritten constitution is this, that with respect to the power that judiciary enjoys, in a written constitution, judiciary generally enjoys wide powers. Okay, judiciary enjoys wide scope, wide powers, wide array of powers here. Why? Because there is a written constitution. So there is a definite constitution that is not the product of the parliament. Written constitution, as it is not the product of the parliament, judiciary, because it can declare any law or any law of the parliament or any provision, any legislation by the parliament to be unconstitutional. Okay, because judiciary can declare any law of the parliament to be unconstitutional. Okay, then it is not just legislation which judiciary can consider unconstitutional. It is also the same is true for executive action also. So any executive action of the parliament can also be declared unconstitutional. So judiciary in that sense is enjoying a lot of power because any legislation, any executive action can be considered by judiciary to be unconstitutional. Okay. While what is the case with unwritten constitution? Understand the point here. What is the relevance of parliament shaping the constitution here? यहाँ पार्लियामेंट शेप कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, इसका रेलेवेंस क्या हुआ? अगर यहाँ की जुडिशरी बोलती है कि कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? पार्लियामेंट ही तो बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो जुडिशरी कौन होती है कहने वाली कि कॉन्स्टिट्यूशन है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? It is the parliament which is shaping the reality called constitution here. Getting it? If that is the case, then how judiciary can say that anything is against constitution? The constitution itself is coming into existence by the parliament. It is the parliament which is giving rise to the constitution here. Or you can say that in a sense becomes a continuous process, that whatever parliament is doing is becoming the constitution. Constitution in that sense becomes a continuous process which is coming into existence in a continuous manner by the legislations of parliament. So judiciary in that sense does not have the authority, or you can say does not have any lever to declare any executive action or any parliamentary action, that is a legislation, to be unconstitutional. Okay, so judiciary here in case of unwritten constitution has limited powers. Okay, limited powers, while judiciary in unwritten constitution has wide array of powers. समझ में आ गया बच्चा? वाइड एरिया ऑफ पावर्स. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. तो अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस जो आप देख सकते हो यहाँ पास वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि अंडरस्टैंड दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट और स्लाइटली कॉम्प्लेक्स. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैन गिव राइज टू बोथ यूनिटरी as well as federal polity. Okay, but unwritten constitution cannot provide for a federal polity. So it can provide only for unitary polity only. ओके, इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए आपको फेडरेशन की कॉन्सेप्ट को समझना होगा. हालांकि आगे सब कुछ आने वाला है, तो फेडरेशन को समझिए कि फेडरेशन क्या होता है. व्हाट इज फेडरेशन? इस इन मोस्ट सिंपल टर्म्स फेडरेशन कैन बी डिफाइंड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर between
सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, सबसे सिंपल वर्ड में सेंटर एंड स्टेट्स। Center here would mean national level or national unit or national level unit, and states means sub-national units. Federation in that sense becomes the distribution of power between national unit and sub-national unit. Now, national unit and sub-national unit may also mean, apart from the center and state, may also come to mean center and every other body that lies beneath the center in the hierarchy. Okay, in the pyramidal structure where the central government is there, then there are, which is their national level, and then there are sub-national level of governments. Okay, so what is the federation? It is the distribution of power between center and sub-national form of governments. Okay, governments which are at sub-national level. So if that is the meaning of federation, understand, can I say that if constitution provides for all the power to the union, and union provides, or you can say distributes or gives certain power to the states, or you can say 50% of the power to the states, can that polity be called a federal polity? Is it federation? If federation means the distribution of power between national and subnational units, and if constitution gives all the power to the union and union distributes 50% of the power to the states, can we call such a polity a federal polity? No, this kind of system cannot be called federal. Why? Because here the states with the power that states are enjoying, those powers have been delegated by the union to the states. Those powers have been delegated by the union to the states. They have not been given by the constitution, because constitution is giving all the power to the union. It is not giving any power to the states. So whatever power states are enjoying in this example that we have taken, those are the delegated powers. When I say that federation means the distribution of power between national and subnational units, I do not mean the power by delegation. पावर बाय डेलीगेशन अलग चीज होती है. फेडरेशन का मतलब पावर डेलीगेटेड पावर से नहीं होता. ठीक है. फेडरेशन का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां पास नेशनल और सब नेशनल लेवल में जो गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शुड बी वेल एक्नॉलेज्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, or you can say that distribution is coming from the constitution itself. Getting it? मतलब constitutional ultimate authority हो स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. ऐसा नहीं हो सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरी पावर यूनियन को दे और यूनियन आधी पावर स्टेट्स को दे दे तो हम उसे फेडरल कहने लग जाएंगे. ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो उस केस में वो जो पावर्स स्टेट्स को दी गई है, जो राज्यों को या किसी भी स्तर की सरकार को, किसी भी स्तर की सरकार को जो केंद्र की सरकार से नीचे है, अगर उसे पावर दी गई है तो वो डेलीगेटेड पावर्स है. ओके, वो पावर डेलीगेटेड पावर है, और डेलीगेटेड पावर की यहां पास बात नहीं हो रही. मतलब बात यह है कि स्टेट्स, फेडरेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्टेट्स के पास जो पावर है वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है. Why so much emphasis on constitution? Why so much emphasis on this particular aspect, that those powers that states are enjoying should be coming from the constitution itself? Because this is emphasized because if union is the authority, or you can say central government or the national level government is the authority which is giving power to the states, then states would be taken as some units of government which are
beneath the central government. In that sense, they are at the mercy of states because all those delegated powers by the union to the states anytime can be taken back by the union. Okay, state in that sense become, or they are at the mercy of the state. Federation asks for decentralization of the power. Okay, that would also result for the greater autonomy to the subnational units. Are you getting it? That is why I'm saying that when federation is defined, it is defined in terms of the distribution of power between center and states, and that distribution should actually be well acknowledged, okay, by the constitution itself, or should be coming by the constitution itself. The idea is that whatever power states are enjoying, they are enjoying not because those powers have been delegated to them by the union, but because those powers have been given by the constitution. यहाँ एम्फेसिस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही दिया जाए पावर इस बात पे इसलिए है कि क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो यूनियन जो अपनी 50% पावर अगर स्टेट्स को देता है, तो जिस तरह से वो पावर्स को स्टेट्स को दे रहा है उसी तरह से वो पावर स्टेट्स से ले भी सकता है। अगर ऐसा सिस्टम रखा जाएगा तो स्टेट्स क्या होंगे? स्टेट्स उस तरह की ऑटोनॉमी एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, और डेलीगेटेड पावर इज नॉट द रियल काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, समझ रहे हैं आप? तो स्टेट्स का एक जो ऑटोनमस रोल है फेडरेशन में, स्टेट्स का जो ऑटोनॉमी है और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें तभी फुलफिल होती हैं जब नेशनल और सब नेशनल यूनिट्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, उस पावर का सोर्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन हो। और कॉन्स्टिट्यूशन उस केस में रिटन ही चलेगा। क्यों? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं काम कर सकता? समझिए इस बात को। अगर इतना समझ गए हैं तो आगे भी समझ जाएंगे, अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखिएगा। Okay, why only a written constitution can create a federal polity? Now, because you understand the meaning of federation, I can discuss that why only a written constitution can give rise to a federal polity. Understand? What is unwritten constitution? Unwritten constitution is the प्रोडक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सब सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है? नाउ इफ देयर इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, दैट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग पावर टू द यूनियन, ओके, इट इज गिविंग पावर टू द यूनियन, and is also giving power to states. Getting it? And then there is parliament, which has created this constitution because it is unwritten constitution. Unwritten constitution is the creation of the parliament, जो मैंने आपको पहले समझा दिया। अगर एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पार्लियामेंट का क्रिएशन है, पार्लियामेंट का प्रोडक्ट है, यूनियन और स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर भी रहा है, तब भी वो फेडरल पॉलिटी क्यों नहीं होगी? इसका आंसर क्या है? यही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि तब भी मैंने बताया कि फेडरेशन का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, और दैट डिस्ट्रीब्यूशन शुड एक्चुअली बी डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. Now, in unwritten constitution, if it is happening that the unwritten constitution is actually dividing power between center and states, then why, even in that situation, it will not create a federal polity? It is so because that even if it is the constitution
which is dividing the power between center and states, even then Parliament can change it any time. Okay? Because Constitution itself is not supreme here. So the distribution of power which is coming from the Constitution will not be having ultimate authority, or uh, that arrangement that has been given by the Constitution can be changed anytime by the Parliament. Getting it? When I said that it is the Constitution which should be the ultimate source for the distribution of power between central states, a concept which was inherent in the idea was this, that in that case Constitution is the supreme authority, and that is why when distribution of power will come from the Constitution, that will be that distribution will be coming from an agency which has the ultimate authority. Unwritten Constitution itself is not an ultimate authority. Then how the distribution that is coming from that particular Constitution between the center and state with respect to the powers, how can you say that that agency is having ultimate authority, or the source of the distribution is having ultimate authority? No, here the source of the distribution does not have ultimate authority, because superior to the Constitution in this case will be the Parliament, which can change the arrangement anyway anytime. ओके, तो उस सेंस में अगर कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से भी अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सेंट्रल स्टेट्स के बीच में, तो भी हम नहीं कह सकते कि पॉलिटी फेडरल है, वो भी एक यूनिटरी पॉलिटी ही होगी, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को ही, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को छोड़िए, कॉन्स्टिट्यूशन खुद बदला जा सकता है किसी भी टाइम पार्लियामेंट के द्वारा। तो उस चीज की बिसात ही क्या जिसे कॉन्स्टिट्यूशन पैदा कर रहा हो, जब तब कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपने आप में पार्लियामेंट का प्रोडक्ट हो। समझ गए इस बात को? तो क्योंकि एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लीगल अथॉरिटी होल्ड नहीं करता, इसलिए उसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच में फेडरल पॉलिटी क्रिएट नहीं करेगा, वो भी एक यूनिटरी पॉलिटी ही होगी। ओके, क्योंकि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को जो कि रिटन नहीं है, पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी वक्त बदला जा सकता है, और इसी वजह से क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पैदा किया गया कोई मैकेनिज्म, इस केस में हमारे इस एग्जाम्पल में वो मैकेनिज्म है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स, उसे भी बदला जा सकता है। पूरा का पूरा कारण या पूरी की पूरी रीजनिंग या लॉजिक इसी बात में बेस्ड था, जब मैं बता रहा था कि फेडरेशन की केस में ये इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो हो वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव किया जाए। इसमें ये बात निहित थी, it was inherent in this claim here, that constitution would be the ultimate authority. It would have the ultimate, or you can say the supreme legal sanctity. But unwritten constitution does not enjoy that legal sanctity. Okay? It is not the supreme law in that case, because Parliament can come and change the constitution anytime. For this reason, it is being said that unwritten constitution cannot create a federal polity. It is a written constitution which can create the federal polity. अब आपने अपनी टेक्स्ट बुक, जैसे दूसरी टेक्स्ट बुक्स जो आप पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत वगैरह, उनमें भी आपने पढ़ा होगा, when you study about the features of the federation, then you find out the features actually mention one of the important features is a written constitution, others being bicameralism, supremacy of judiciary, supremacy of the constitution, independence of judiciary. But there, when I will explain you those points, actually only those parts of the constitution should be written which deal with the distribution of power. You might get surprised here that other parts of the constitution might remain unwritten, that is uncodified, even in a federal polity. Okay, so that is the importance of a written constitution. Okay, so in order, although it doesn't mean that every written constitution is going to create a federal polity, no.
But only a written constitution can come out with a federal polity. Unwritten constitution cannot create a federal polity. Now, a written constitution can create either a unitary polity or a federal polity, or you can say it can come out with various combinations whereby there can be a tilt towards unitary system, or there can be a tilt towards federal system. Okay, so that is a debate for a different time when we'll start federation. अभी मेरे को ये समझाना था कि how unwritten constitution cannot create a federal polity. Unwritten constitution will necessarily lead to the creation of unitary polity. Okay, while a written constitution can create a unitary polity as well as a federal polity. Okay, federal polity. Now, it doesn't mean that if there is if there is unwritten constitution, it is going to create a federal polity alone. No, it can come out with a unitary polity also. But federal polity can be created only by a written constitution. It cannot be created by an unwritten constitution. Okay, so I think this is clear. Let us see that the next difference that you can see here is this, that unwritten constitution is not an enacted constitution. It is not an enacted one. Why? Because it is an evolved constitution. Evolved constitution. It is called evolved constitution. Evolved constitution is not created by any single body. It is not created by any single body. Or you can say that it is actually a combined effort, a joint effort of many people over a period of time. Okay, so it is not created, you can say, not created by any single body, by a single body. While what about written constitution? Written constitution is an enacted one. It is an enacted constitution. Okay, and it is actually created by any special body. Any special body is there. Okay. Now, in case of India, this special body was Constituent Assembly. Getting it? This special body was Constituent Assembly, and which enacted the constitution. Okay, Navakesh. Now, understand. Next point. Here you can see that as we have seen that there can be various differences between written and unwritten constitution. So one difference can be with respect to the rigidity of the constitution. Rigidity of the constitution. मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशन कितना रिजिड है, ये भी एक फैक्टर बन सकता है डिफरेंस का रिटन के बीच में और अनरिटन के बीच में. ठीक है, देखिए इसमें कैसा है. रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप कंसीडर करें तो अनरिटन या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को पहले देखते हैं. तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है. ओके, it can be rigid also, it can be flexible also. Generally, federal constitution, the constitutions, those written constitutions which create a federal polity are rigid. But any constitution which is written can be rigid or can be federal. What is the meaning of rigid and flexible? Meaning of rigid means amendment जो है difficult होगा. Amendment is difficult. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह के बदलाव करने हैं तो एक डिफिकल्ट प्रोसेस होगा. और फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है? फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि अमेंडमेंट इज
इजी। ओके, मतलब बड़ी जल्दी बड़ी आसानी से बदला जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? रिजिड होता है कि फ्लेक्सिबल होता है? आप याद करिए कि व्हाट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। I told you that you can see that it is a project of the parliament, or you can say it is actually a set of law legislations given by the parliament. In that sense, it becomes a craft of the parliament. Now, if it is so, then it will not be a rigid constitution. It will always be a flexible constitution, because it is giving the origin of this kind of unwritten constitution is to be found in the institution of parliament. Parliament, in that sense, is saving the unwritten constitution. Okay, so they are always flexible in nature. ठीक है, यहाँ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, अनरिजिड भी हो सकता है। रिजिड क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बने जहां पास पार्लियामेंट उसे बदलाव ज्यादा ना कर पाए, या बड़ी डिफिकल्टी से ही बदलाव पॉसिबल। लेकिन यहाँ पार्लियामेंट ही तो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर रही है, बिकॉज पार्लियामेंट जो कर रही है उसी सेट ऑफ लॉज और रेगुलेशन से कॉन्स्टिट्यूशन शेप हो रहा है। तो डेफिनेटली क्या होगा, वो एक फ्लेक्सिबल चीज होगी उसे चेंज करना। ठीक है, आसान होगा उसे बदलना। ये हुआ अगला डिफरेंस। अब अगला डिफरेंस देखते हैं। इधर देखिए, अगर रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हमें देखना होगा कि वेयर डू वी स्टैंड। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ, क्या रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है? तो इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली ब्रिंग्स अ फाइन बैलेंस, और इट इज एन एग्जांपल of a very deft balance between rigidity and flexibility. Okay, so what that means, that it is actually a combination of being rigid as well as flexible. ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है कि apart from few changes in the constitution which require for a special kind of majority, various things in our constitution are actually easy. By a simple process, the amendment can be brought about. That we will study when we are going to see amendment. That is a different chapter in polity. हम सारा कुछ तो कवर करने वाले हैं इन मैराथन सेशंस में, तो हम उसे भी देखेंगे। ठीक है, ये चीज है। ओके, आगे देखते हैं कि अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक समझिए कि it is a fine balance between rigidity and flexibility. Can you name any constitution which is considered rigid? So USA's constitution is one example of rigid constitution. Okay, what about UK? I told you that unwritten constitution is going to be flexible constitution. UK की constitution unwritten constitution, उस सेंस में क्या होगा, एक flexible constitution है। श्रीलंका का constitution भी flexible constitution ही माना जाता है। ओके, तो ये रिजिडिटी कैसे है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हम देखा जाएगा हमें जब हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से फीचर्स को बड़ी आसानी से चेंज किया जा सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से फीचर्स बहुत ज़्यादा टफ है चेंज करना, जिन्हें प्रॉपर प्रोसीजर्स है, तो उसे हम बाद में देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। चलिए देखते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या मतलब है? Constitutionalism it refers to a system of governance, or you can say a kind of governance
or system or structure of governance whereby the powers of the government or government's powers are restrained, or you can say um, they are not unrestricted, or they are not unconstrained, and this is ensured that the government's power are always limited, restrained, okay, restricted, well defined, well defined. तो गवर्नमेंट की पावर क्या हो, लिमिटेड हो, रिस्ट्रेन्ड हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, वेल डिफाइंड हो, या अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स नहीं होंगी, so that the government while exercising in its power remains within the limit. It does not become limitless in exercising its power, because that limitless exercise of power or limitless power can make it authoritarian. Okay, it can also become absolutist. ओके, अब ये सारी चीजें आगे भी आएंगी, देखा जाएगा इसको। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब एक ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से है जहां पास गवर्नमेंट की पावर के ऊपर अंकुश लगाया जाता है, या गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं, जो शक्तियां होती हैं, वो निरंकुश नहीं होती हैं। ओके, द पावर्स हियर आर नॉट exercised in an unrestrained or unrestricted manner or unlimited manner. Okay, the government's power are restrained or restricted so that it does not become arbitrary or authoritarian or absolutist, because only then a government can actually serve its people. Okay, otherwise, if government is able to exercise power in unlimited, unrestrained and unrestricted way, then there is every chance that it may turn out to be a corrupt or exploitative government. Okay, so there can be different countries, or there can be a country with a constitution, but if there is no constitutionalism, then in that country the constitution might not restrain the power of the government. Okay, तो बिना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या करेगा, गवर्नमेंट की अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज को कंटेन नहीं कर सकता। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो इस बात को? तो हो सकता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल लिबिया अंदर गद्दाफी, ओके, नॉर्थ कोरिया, इन सब के भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। Getting it? But if there is no constitutionalism, then that would mean what? That if with a constitution also there can be governments which are exercising powers in unlimited, unrestrained, unrestricted manner, leading to the exploitation of power, because those governments are more likely to become authoritarian, and it has been generally found that those governments where constitutionalism is not in practice are generally authoritarian only. Okay, what is the meaning of authoritarian? Authoritarian का यहाँ पास सिंपल मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि which does not entertain opposition, any kind of opposition, निरंकुश शासन, किसी भी तरह का विरोध करोगे तो खत्म हो जाओगे, उसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन। ठीक है, लेकिन मैंने यहां भी ये चीज समझाई आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ इज नॉट अ गारंटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को मैं फिर से समझा दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल बड़े सिंपल टर्म्स में आप ये बोल सकते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच की रिलेशनशिप को तय करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंश्योर करता है कि सिटीजन्स गवर्नमेंट से क्या डिमांड कर सकते हैं, या गवर्नमेंट सिटीजन्स के कौन से अधिकारों के छीन नहीं सकती।
या गवर्नमेंट अपनी शक्ति का प्रयोग करते वक्त नागरिकों के कौन से आयामों को में अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। आप ये कहें कि कौन से ऐसे डायमेंशंस हैं जहां पास सिटीजन्स अपने आप को गवर्नमेंट की अनरिस्ट्रिक्टेड अनस्ट्रेन्ड पावर से सेफ रख सकते हैं या अनटच्ड रख सकते हैं। दैट इज ऑल इंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। I told you that there can be constitutions in the country or in various country, but there might not be constitutionalism. But constitutionalism will definitely require a constitution. मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बिना कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं हो सकता, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होगा। ठीक है, सबसे सिंपल चीजें हैं ये। आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान से सुनिए। ये टफ चीजें नहीं, इनको मैं टफ वे में मैं समझा भी नहीं रहा हूँ आपको। सबसे सिंपल तरीका जो यहाँ पास बताया जा सकता है इन चीजों को, ये सारे के सारे बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स हैं एक्चुअली, और इनका सबसे सिंपल जो तरीका हो सकता है वो यहाँ पास अपनाया जा रहा है। ओके, तो अगर आप बिल्कुल नए हैं पॉलिटी में तो आप इस चीज को समझें कि यहाँ पास कुछ कॉन्सेप्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं। बस मेरा यहाँ पास एफर्ट है कि मैं आपको वहाँ पास सबसे सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, how it is going to restrict or restrain or limit the power or the extent of the powers of the government. It is going to do so by clearly mentioning, by clearly outlaying the powers. मतलब साफ साफ बता दे कि भैया तुम्हारी ये शक्तियां हैं और ये शक्तियां तुम्हारे नहीं है, तो उधर क्या होगा, गवर्नमेंट की शक्तियां साफ साफ रहेंगी। ठीक है, और उन शक्तियों की सीमाएं भी तय करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर रहा हो। गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कैसे करेगा, गवर्नमेंट की पावर को क्लियरली आउटले करके, क्लियरली बता के। उस केस में क्या होगा, उस केस में आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां समझिए कि गवर्नमेंट जो पावर एंजॉय कर रही है, गवर्नमेंट जो पावर एंजॉय कर रही है, वो पावर कहां से आ रही है? वो पावर किसी लीडर से नहीं आ रही है। कोई हिटलर नहीं है यहाँ, कोई गद्दाफी नहीं है यहाँ, कोई किंग जोंग उन नहीं है। गवर्नमेंट की जो पावर है वो आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जहां प्रैक्टिस में होगा वहां कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को डिसाइड करेगा, पावर की लिमिट को डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट की ड्यूटीज को डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट की ड्यूटीज क्या होंगी, और गवर्नमेंट अगर उन ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करती या पावर को, अपनी पावर की लिमिट को ब्रीच करती है, तो ग्रीवांसेस जो पैदा होंगे, वो ग्रीवांसेस को कैसे एड्रेस किया जाएगा, ये सारी चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को कैसे लिमिट करता है, लोगों को फंडामेंटल राइट्स देंगे। ओके, फिर डीपीएसपीज है। अगर किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट वायलेट करती है तो उसके केस में क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट में जहां फंडामेंटल राइट वायलेट किया जा रहा है आर्बिट्री मैनर में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये सब चीजें अगर नहीं फॉलो की गई हैं तो वहां पास गवर्नमेंट अपने पावर की लिमिट को जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इम्पोज की गई है उसे ब्रीच कर रही होगी, और उस केस में आपके पास ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू के रूप में ये हमेशा एक विकल्प रहता है कि आप जुडिशरी को अप्रोच करके उस लेजिस्लेटिव एक्शन, या फिर हो सकता है इस केस में इट इज मोस्ट लाइकली टू बी एक्सिक्यूटिव एक्शन जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है, उससे आप ओवर रूल करा पाए जुडिशरी। मतलब जुडिशरी कैन डेफिनेटली आउटलॉ
any legislative action or any executive action which goes beyond the powers that have been enunciated by the Constitution to be exercised by the government. Okay, which are to be exercised by the government. If a government or any legislative action or any executive action, if it is an action of government, it is going to be executive action, can be overruled or can be declared unconstitutional. Okay. अच्छा, एक चीज और समझिए कि मैंने यहाँ बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को डिसाइड करे, ओके, और गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करे। गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने का एक तरीका होगा कि गवर्नमेंट की पावर को क्लियरली मेंशन करे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उस सेंस में अगर आप समझ पाए तो आप समझने का प्रयास करें यहाँ पास कि कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से एक नेसेसरी कंडीशन बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए। समझ रहे हो? ठीक है, ओके। लेकिन it is just a necessary condition, it is not a sufficient condition. So how we will be able to arrive at a sufficient condition with respect to the constitution so far as the attainment of constitutionalism is concerned? That is to be done by ensuring that constitution is the result of, or you can say has been made not by the government itself but by the people. अगर गवर्नमेंट खुद या कोई लीडर या कोई डिक्टेटर खुद कॉन्स्टिट्यूशन बना दे और बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही उसकी पावर दी जा रही है, तो ये सिस्टम तो मतलब it will be a contradiction in terms that you cannot say that government is limited by the powers that has been given to it by the constitution. Okay, जैसे फॉर एग्जाम्पल किंग जोंग उन आए, ओके, नॉर्थ कोरिया में, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि किंग जोंग उन और उनकी पार्टी और उनके जो साथ के मेंबर्स होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, वो क्या काम करेंगे, उनकी पावर कितनी होगी, पावर कितनी लिमिटेड होगी, पावर का लिमिट क्या होगा। तो क्या ये रियल सेंस में लिमिट करना हुआ पावर को? नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद उन्हीं के द्वारा दिया जा रहा है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन पावर की लिमिट तय कर रहा है। अगर ऐसा केस है तो वहां पास कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पैदा नहीं हो जाएगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर रहा है। नहीं, ये चीज तब पॉसिबल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तब पॉसिबल है जब कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर रहा हो, रिस्ट्रेन कर रहा हो, कंस्ट्रेन कर रहा हो, ओके, उनकी पावर्स को इन्यूमरेट कर रहा हो कि ये पावर्स है आपकी और ये पावर की लिमिट है। वो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के द्वारा डेमोक्रेटिक तरीके से इवॉल्व हुआ, डेमोक्रेटिक तरीके से क्रिएट किया गया। ओके, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द कॉन्स्टिट्यूशन, but that is a necessary condition. What is the sufficient condition? That constitution should actually be a result of, or you can say it should be democratically constituted or it should be democratically formed. Okay, so it should be the result of democratic process whereby people have participated, themselves have participated, leading to the constitution. Okay, अच्छा, ये हुआ सबसे बेसिक बात कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। लेकिन यहां पास इतना एम्फेसिस क्यों, इस बात पे इतना एम्फेसिस क्यों है कि यहां पास गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया जाना है?
इस बात पे एम्फेसिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का इस वजह से है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो दूसरी है वो है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। देखिए 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। पहले एक मोनार्क हुआ करता था। मैं आपको मिडिवल पॉलिटी का जो फीचर बताता हूँ कि मोनार्क होता था। मोनार्क जो बोलता था वही उस स्टेट में किया जाता था। तो एग्जीक्यूटिव, फाइनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन थी? मोनार्क। कानून क्या थे? वही जो राजा बोल दे वही कानून था। तो फाइनल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कौन थी? मोनार्क। और किसी ने गलत किया है कि सही, कानून का पालन हुआ है कि नहीं, इस चीज को भी अल्टीमेटली डिसाइड करने वाला कौन था? मोनार्क। मतलब उस केस में क्या है, एग्जीक्यूटिव भी मोनार्क है, लेजिस्लेटिव बॉडी भी मोनार्क है, जुडिशरी बॉडी भी मोनार्क है। ठीक है। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस तब एग्जिस्ट करेगा जब देयर विल बी सेपरेशन ऑफ पावर। पहले तो वहां पास सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए और ये 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट अपने अपने डोमेन में अलग अलग अपना रिस्पेक्टिव काम कर रहे हैं। ओके, इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। और इन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट में चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। जैसे किसी डिक्टेटर को किसी सिटीजन में गुस्सा आ गया तो डिक्टेटर समझिए कि वो गवर्नमेंट का फॉर्म है, एग्जीक्यूटिव का है, तो वही सजा ना दे दे कि चलो इसको फांसी दे दी जाए। ओके, ऐसा अगर हो रहा है तो आप कह सकते हैं वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। ठीक है। और चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब ये भी होता है कि ये रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जब अपने ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट जब अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में काम करें तो इनके जो पावर्स हों वो ऑलमोस्ट इक्वल हो। सो दे विल बी हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल पावर्स। Only then this balance will be ensured. And what is the meaning of checks here? Balancing means that all the organs of the state will be having almost equal powers. What is the meaning of check here? Check would mean that one organ of the state, while exercising its authority in its respect in its particular domain, should not breach the domain of any other organ. तो डिक्टेटर जो है जज ना बन जाए, या गवर्नमेंट का कोई पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर जज ना बन जाए। ओके, प्राइम मिनिस्टर यहां होगा, प्राइम मिनिस्टर जज ना बन जाए। और यहाँ पास लेजिस्लेचर है, समझिए कि कोई सांसद है वो प्राइम मिनिस्टर की तरह बात ना करने लगे, या फिर वो भी जज ना बन जाए, या जज जो है लेजिस्लेचर ना बन जाए। जज देखिए कि उनका काम है एडजुडिकेट करना, लेजिस्लेट करना पार्लियामेंट का काम है। ठीक है। अगर जजेस खुद भी लेजिस्लेचर का वाला काम करने लग जाएंगे तो फिर लेजिस्लेचर की बाउंड्री को, उस डोमेन को इंक्रोच कर रहे होंगे, अपने डोमेन से बाहर जाके दूसरे के डोमेन को इंक्रोच कर रहे होंगे। ओके, तो ये वो टेंडेंसी है जब कोई जज बाद में डिक्टेटर बन जाएगा। हाँ, इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर जज लेजिस्लेशन का काम करने लग जाए तो हो सकता है कि वो टेंडेंसी तो सिमिलर है। तो इसमें आपने सीखा कि ये कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है, और सेपरेशन ऑफ पावर के बाद चेक्स एंड बैलेंसेस होना जरूरी है with respect to these 3 organs of the state, that is executive, legislature and judiciary. चेक्स एंड बैलेंसेस तभी पॉसिबल है जब सेपरेशन ऑफ पावर हो, है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देखते हैं। आपने अभी तक सीखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए जरूरी है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और वो कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी डेमोक्रेटिकली or should be given by the people in a democratic form. Okay, so it should be a product of people giving the constitution themselves, or you can say democratically formed constitution होना चाहिए। ओके, फिर आपने देखा कि there should be separation of power, और फिर that also would require checks and balances. Okay, checks and balances. Understand that this actually is going to require, the constitutionalism I'm talking about is going to require the independence of judiciary also, or you can say independent judiciary. That will also be required in constitution. Okay, so that judicial review could be possible. So judicial review is possible only when there is independence of judiciary. समझ रहे हो आप इस बात को? जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू किसका? जुडिशियल रिव्यू ऑफ executive actions. It will also include administrative actions, and by all means it will also include legislative actions. इनका रिव्यू हो पाए। रिव्यू का मतलब यहाँ पास ये है कि जुडिशियल रिव्यू में ये बताया जाएगा whether these actions are as per the constitutional scheme or not. So if they go against the scheme of the constitution, they can be declared unconstitutional, okay, by the judiciary. But judiciary can declare executive action, administrative action or legislative action unconstitutional only when it is independent. Okay, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन का होना, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो जो डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो, सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी होना चाहिए ताकि जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल हो। किसका? एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एक्शंस का। ये सारी चीजें किस चीज की, किस तरह पॉइंट आउट कर रही हैं कि इफ देयर इज अ गवर्नमेंट देन दैट गवर्नमेंट शुड एक्चुअली बी अ लिमिटेड गवर्नमेंट। Limited government. Getting it? So constitutionalism in that sense, what it is expecting, or what it expects, constitutionalism expects a limited government. Okay? मेरा सजेशन रहेगा कि आप नोट्स भी लेते जाएं, मतलब रनिंग नोट्स आप बनाते जाएं इसके। प्लीज इसको ऐसे मत लें कि ये फ्री में मिल रहा है। ओके, ये काफी वैल्यूएबल चीज है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म expects a limited government. ठीक है, limited government. But it is not just about limited government. Constitutionalism क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट की पावर को लिमिट नहीं करता। Constitution also provides the rights to the people. Getting it? Actually, if you study Indian Constitution at work, सबसे बेसिक चीज जो मैं आपको कहूंगा पढ़ने के लिए 11th क्लास की, अगर आपने नहीं पढ़ा है उसे, then you will find that it is actually the rights which are given to the citizens, which ensure that the government exists only in limited form, or there is a limit in the power of government. So one way of ensuring that the government's power is limited
is to provide citizens with the fundamental rights. So one way of ensuring the limited nature of government is to provide citizens with these fundamental rights, set of fundamental rights. Okay. Now, along with fundamental rights, or along with rights, citizens are also expected to perform certain duties. Now, this combination of rights and duties is to be found because no rights can be claimed in justiciable way without the performance of duties. That is one understanding that the jurisprudence across the globe has maintained. But duties or the performance of duties is not made contingent over the enjoyment of rights, because rights are important to limit the power of the government. Now, if rights are made contingent upon the performance of duties, that will give government the right to deny the fundamental right to the citizens in case they have not been able to perform the duties. So generally it is found that a liberal constitutional democracy does not make the performance of duties mandatory for the citizens, as is the case with Indian Constitution also. You are expected to perform fundamental duties, but if you do not perform fundamental duty, doesn't mean that you are not able to enjoy your rights also. No, that is not the case in India. Okay? And that is not the case in any of the liberal constitutional democracy that we have across the globe. The very reason why duties have been put in many of the constitution is that along with the enjoyment of rights, citizens should also be careful, or should also be willing to perform their duties so that they could contribute productively in the nation building. Okay, or they could become productive contributors to the society. Getting it? Getting it? So this way you understood that constitutional would mean, or constitutionalism would require various things. Okay, constitutional would require various things. Now there are actually facets, or you can say there are certain practices which make the constitutionalism strong, and then there are practices which make it weaker. Okay, so for example, mass illiteracy, corruption, division in the society along ascriptive identities like caste, religion, ethnicity, etc. Okay, all that will make the constitutionalism weaker. Okay, whereas the concern for fundamental rights, civic republicanism, literate and responsible citizenry. ओके, मतलब पढ़े लिखे लोग, सिविक रिपब्लिकनिज्म का मतलब होता है कि लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट एक्टिविटीज में. ये कॉन्सेप्ट रेनेसा के टाइम में यूरोप में आया, और एक्चुअली सिविक रिपब्लिकनिज्म रिलेट करता है दो कॉन्सेप्ट को. एक, लोगों की फ्रीडम जो वे एंजॉय करेंगे किसी पर्टिकुलर स्टेट में, और उनका सिविक पार्टिसिपेशन जो वो स्टेट एक्टिविटीज में, स्टेट से रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, उससे रिलेट करता है. मतलब कि फ्रीडम, देयर हैव बीन फिलोसफर्स लाइक फॉर एग्जांपल अन्ना अरेंट हु हैव थियोराइज्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. तो मतलब कि लोगों की फ्रीडम एक्चुअली डिपेंड करती है कि वो उनके लेवल ऑफ सिविक पार्टिसिपेशन में. ओके, तो ये चीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को स्ट्रेंथन करेगी. लिटरेट और अवेयर सिटीजनरी जो होगी वो भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रमोट करेगी. फंडामेंटल राइट्स के लिए
जो कन्विक्शंस हैं बोथ ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट में और सिटीजनरी में, वो चीजें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को स्ट्रेंथन करेंगे। ओके, रिस्पेक्ट, लॉ के लिए रिस्पेक्ट फॉर लॉ, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को स्ट्रेंथन करेगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया इज वीक और स्ट्रॉन्ग, मैं आप ही से ये क्वेश्चन पूछूंगा, मैं कहूंगा कि आप ही आंसर करें कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंडिया में स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। मैंने आपको फीचर्स बता दिए कि अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, या कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और कौन से फैक्टर हैं जो किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को वीक करते हैं। आप देख सकते हैं, इतना आप इंडिया के बारे में जानते हैं कि आप बता पाएंगे कि हमारे यहाँ कौन से फैक्टर्स ज्यादा है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ओके, जैसा कि हम सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट अभी से शुरुआत कर रहे हैं, उन बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने अभी यहाँ बहुत सारी चीजें देखी। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में जब हम पॉलिटी शुरू करते हैं, वी स्टार्ट विथ प्रियम्बल। ओके, लेकिन प्रियम्बल में जाने से पहले भी कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। ओके, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने जैसा कि कहा कि आई विल टेक यू फ्रॉम द मोस्ट बेसिक लेवल टू द मोस्ट एडवांस्ड लेवल। जहाँ पास एडवांस लेवल की क्लासेस में स्पेशल क्लासेस में लूंगा, और वहाँ पास मैंने करंट अफेयर्स भी मैं कवर करूंगा। ओके, स्पेशल क्लास अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, यहाँ पास ये समझिए कि प्रियम्बल एक्चुअली जिस डॉक्यूमेंट में बेस्ड था, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, इसको जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो लेट अस नो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो मीनिंग की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, किसे कहते हैं? इट इज एक्चुअली अ डॉक्यूमेंट, इट इज द डॉक्यूमेंट which explains or which briefly explains the purpose of assembly. Okay, so that was the first document which was presented in the Constituent Assembly, and the purpose here was the very reason behind the presentation or the introduction of objective resolution by the Jawaharlal Nehru was so that we could know about the purpose of assembly here, why we have assembled. तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हम क्यों असेंबल हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू ने उस चीज को कैसे आंसर करना चाहा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ओके, सो दैट इज व्हाई इट वाज पुट बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड होल द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, ऑल मतलब आप कह सकते हैं कि द होल फिलोसॉफिकल फाउंडेशन of Indian state actually that has come out to be because of the constitution that we have is to be found in objective resolution here, which will later become preamble. तो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन क्या है हमारे इंडियन स्टेट का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत क्लियर होता है, वो क्या है? वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बड़े क्लियर वे में एक्सप्रेस किया गया था। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन का मतलब यहाँ पास इस चीज से है कि मतलब इंडियन स्टेट इज विच इंडियन स्टेट किस तरह का स्टेट है? ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, या अथॉरिटेरियन स्टेट है, या एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट है, या रिपब्लिकन स्टेट है? ओके, क्या ये जस्टिस को इंपॉर्टेंस देता है कि नहीं, इसके लिए जस्टिस की अहमियत क्या है? ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं? ऑल दोज क्वेश्चंस एक्चुअली डिसाइड व्हाट इज द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडिया एज अ स्टेट or Indian state, and that finds the best expression in the objective resolution that was put forward before the Constituent Assembly by
Jawaharlal Nehru. Okay, and this was actually moved in the first session of Constituent Assembly. और डेट अगर आप यहाँ पास देखना चाहें तो this is 13th December 1946. This is the date in which this objective resolution was introduced, and this was actually uh, adopted by the Constituent Assembly in the month of January, that is 22nd January 1947. तो इस दिन ये अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। तो एक ऐसी चीज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या, इसका मीनिंग क्या है कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी असेंबली में जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसका पर्पज होता है ये बताना कि हम क्यों असेंबल हुए, मतलब ये असेंबली क्यों फॉर्म की हुई है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्यों बनाई गई है वो यहाँ पास पता चलता है इससे। प्लस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास किया गया था विच was passed by Constituent Assembly and which was put forward by Jawaharlal Nehru, that also clearly laid down the philosophical foundation of Indian state. Okay, so this is something that you should know. Then, if it is so important that it lays down the foundation, philosophical foundation of Indian state, then it is necessary to find out what are the most important points that were there in objective resolution. तो अभी हम जानते हैं कि सबसे important points क्या थे उस objective resolution में. So now we are going to cover the most important points in objective resolution. तो ये बहुत सारे points हैं और इसमें सबसे important point मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला point आप कह सकते हैं कि as objective resolution gives you the idea about the purpose of the assembly. So here this actually laid down the broad outline that in which Constituent Assembly would be working in order to, or in the direction of creating the constitution for India. Okay, and there you can say that this resolution contained the points like that India should be a democratic or sovereign republic. That was the most important point here, one of the most important point, that India is to be democratic and sovereign republic. Okay, so what is the meaning of democratic here? Democratic means that the mandate to rule emanate from people, और सत्ता का अधिकार कहाँ से पैदा हो रहा है, लोगों के द्वारा, लोगों से पैदा हो रहा है। और इसका ये भी मतलब होता है, और जहां भी डेमोक्रेसी होगी देयर विल ऑलवेज बी काइंड ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी मतलब होता है पॉलिटिकल इक्वालिटी, और पॉलिटिकल इक्वालिटी अगर आप मेरी जो मैं PSIR में की कॉन्सेप्ट की क्लास ले रहा हूँ वहां मैंने समझाया इस चीज को। पॉलिटिकल इक्वालिटी बहुत सिंपल टर्म से आप सीख सकते हैं, इट इज 1 पर्सन 1 वोट सिस्टम, 1 वोट। और 1 पर्सन 1 वोट का मतलब होता है कि कोई भी किसी भी तरह के प्रिविलेजेस नहीं है, स्पेशल राइट्स नहीं है किसी सेक्शन को। ओके, तो उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी, सबसे सिंपल टर्म से। सोवरेन का मतलब होता है कि संप्रभुता है। ओके, हिंदी में से संप्रभु बोलते हैं। संप्रभु का मतलब यहां पास हो जाएगा, सोवरेन का मतलब होता है कि, और it means that if Indian state is sovereign, that would mean that it is not constrained by any inside or outside factor. No inside or outside power or element or unit exercise authority over the Indian state. If this is so, then Indian state will be a sovereign. If India is sovereign, तो कोई यूनाइटेड स्टेट्स हो या जर्मनी हो या रशिया हो या फिर अंदर के मॉविस्ट हो या गुपकार गैंग हो, कोई भी क्या करेगी, इंडियन स्टेट को मजबूर नहीं कर सकते कुछ ऐसा करने के लिए जो इंडियन स्टेट नहीं चाहता। ओके,
वो इंडिया को सोवरेन बनाएगा। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड बॉडी होगी। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बॉडी होगी, और मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो इलेक्ट किया जाएगा, वो हेरिडिटरी ऑफिस नहीं होगा। आपके केस में हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। ओके, तो अगर हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट आपके केस में क्या है? एक इलेक्टेड ऑफिस है, ऑल्दो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, लेकिन तब भी एक इलेक्टेड ऑफिस है। ओके, जैसे यूके रिपब्लिक नहीं है। यूके रिपब्लिक क्यों नहीं है? क्योंकि यूके के केस में जो हेड ऑफ द स्टेट है वहां पास मोनार्क है, और वो एक हेरिडिटरी ऑफिस है। ओके, समझ रहे हैं? तो दिस वाज वन पॉइंट. Now the second point was this, that India is to have a federal form of government. Federal form of government. Okay, federal form of government. और जहां पास मैं आपको समझा चुका हूं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ओके, then next point was that India will also have to provide for the freedom of thought, and all that is there in uh, various parts of the constitution. Freedom of the thought, जैसे ये चीज क्या है आपके फंडामेंटल राइट में, हम हालांकि कवर करेंगे सारी चीजें। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, also association and action. Okay, so this was there in objective resolution. Okay, then it also talked about, the next point you can say that it also talked about providing safeguards for the minorities. Okay, and people from backward and tribal areas. So you can say that it also provided for, or it is to be provided, or you can say India is to provide adequate safeguards for minorities and people from backward and tribal areas. Okay, are you getting it? ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, वो था कि इंडिया इज टू अटेन द राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस in the world. Getting it? And India is to contribute to the promotion of world peace. ठीक है, तो आप देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कुछ पॉइंट्स प्रियम्बल में, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, एक भी बार पढ़ा है, प्रियम्बल में है, कुछ पॉइंट्स फंडामेंटल राइट्स में है, कुछ पॉइंट फंडामेंटल डीपीएसपीज में है ना? ठीक है, जैसा कि ये चीज क्या है, आर्टिकल 51। ओके, तो ये चीज है। देखिए आगे देखते हैं, यहां देखिए कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सबसे पहले जो चीज प्रेजेंट की गई थी वो थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने आपके सामने रखा। ओके, ये कहाँ रखा गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ताकि असेंबली का पर्पस क्लियर हो सके।
और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है एक्चुअली पर्पस है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाना है वो इन लाइंस में होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए। ओके, तो कुछ बातें या कहें कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में जान लेते हैं। So we are going to cover the important points, or you can say the factual points, facts, important facts about Constituent Assembly. तो अगर बहुत हिस्ट्री में पीछे ना जाए तो it is the cabinet mission plan in the 1946, which actually where Congress finally agreed. आप कह सकते हैं कि कांग्रेस फाइनली जो है एग्री कर गई to make a constitution for ourselves. That was actually the plan which was put forward by cabinet mission. Or when Congress finally agreed to it, then that you can say is the origin of uh, or you can say there it was decided that the steps will be taken to first form the Constituent Assembly, which will give rise to or which will shape the Constitution. Okay, now next fact जो है आप यहाँ जानने के लिए है कि elections जो हुए थे, elections for Constituent Assembly जो हुए थे, Constituent Assembly, they were held in July 1946. थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं, ये आपको एग्जाम में कभी कभी काम आ जाते हैं. ओके, नाउ इट वाज फाइनली कंपोज्ड, ऑल्दो इलेक्शंस वर, देखिए ये बहुत टफ नहीं होता है, इसको आप 15-20 बार देख जाएंगे तो आप याद हो जाएगा. जैसे मुझे जो फाइनली कंपोज हुई दैट वाज इन द मंथ नवंबर 1946. ठीक है, और फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की दैट वाज इन द ईयर ऑन 9th December 1946. 9th December 1946. Okay, and the first president who was elected here, that was Dr. Sachidanand Sinha. Okay, so following actually the French practice, जो सबसे सीनियर मेंबर थे उनको बना दिया गया, बाद में फुल टाइम प्रेसिडेंट बनाया गया. ये इंटरिम प्रेसिडेंट थे. ओके, वन इंटरिम प्रेसिडेंट. ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग, बिकॉज प्रेसिडेंट के बिना तो मीटिंग हो नहीं सकती, इसलिए उन्हें बना दिया गया. फ्रेंच प्रैक्टिस का मतलब कि सबसे सीनियर मेंबर को बना दिया गया प्रेसिडेंट. फिर सेकेंड मीटिंग हुई जस्ट 2 दिन में 11th December. ठीक है, 1946. और यहां पास फुल टाइम प्रेसिडेंट मिला हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और वो आप जानते हैं कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके, so full time president was elected. Getting it? फिर आगे अगर आप बात करें तो आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो है फर्स्ट सेशन कब हुआ. तो फर्स्ट सेशन हुआ जस्ट 2 दिन बाद 13th December 1946. और यहाँ पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से शुरुआत हुई थी. ठीक है, so this actually started with objective resolution. और फिर आप जानते हैं कि बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी, यहाँ पास बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी, और उन कमिटीज में सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी जिसने एक्चुअली ड्राफ्ट तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी. देखिए बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स हैं यहाँ पास जो आप आसानी से याद रखने चाहिए आपको, और जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आसानी से आप याद रख हो सकते हैं, और इम्पोर्टेंट है उन्हीं को मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पास पॉइंट्स में. तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? 29th August को, 29th August 1947. ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं कि आजादी के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी. ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, उसके 14 दिन बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी.
ठीक है, और इट वाज 7-member बॉडी एंड इट वाज चेयर्ड बाय द ग्रेट डॉक्टर अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा चेयर की गई थी। इट वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर, ओके। और ड्राफ्ट फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन इसने कब तैयार करके रख दिया था? इसने ड्राफ्ट फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया था अक्टूबर 1947 में। ठीक है, बहुत एफिशिएंटली काम किया था इन्होंने। ठीक, फिर देखिए कि ड्राफ्ट जब तैयार हो गया तो एक कमेटी बनी जो ड्राफ्ट को रिव्यू करने के लिए बनी थी, कमेटी टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज हेडेड बाय श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ओके, श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और फाइनली जब रिव्यू हुआ, पब्लिक को प्रेजेंट हुआ, फिर वहां पास फिर से डिस्कशंस हुए, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कब होता है? 26 नवंबर 1949। ठीक, तो अगर आप काउंट करें, सो दिस टुक अस our Constituent Assembly 2 years, 11 months and 18 days to prepare this constitution. समझ रहे हो? इतना टाइम लगा। और कितने सेशंस लगे? 11 सेशंस हुए, टोटल 11 सेशंस थे। ठीक है, फर्स्ट सेशन आपको याद है, मैंने बताया आपको 13 दिसंबर, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से शुरू हुआ था। फिर कुछ मेंबर्स के बारे में जान लीजिए कि मेंबर्स कितने थे। तो ओरिजिनली जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उनकी संख्या थी 389 मेंबर्स, 389 मेंबर्स, ओके, जिनमें से 296 क्या थे मेंबर थे, 93 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, 389 में 93 मेंबर्स जो है प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, जो रियासतें थी उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे। ठीक, आगे एक दो पॉइंट्स और है बस यहाँ पास। 296 मेंबर्स जो थे वो उनको कहां से चुना गया था? वेरियस प्रोविंशियल असेंबलीज से। ठीक, और जो रेशियो रखा गया था यहाँ पास रिप्रेजेंटेटिव टू पॉपुलेशन रेशियो जो मेंटेन किया गया था वो कितना था? 1 to 10 लाख, मतलब हर 10 लाख लोगों के बीच के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन बाद में 90 मेंबर्स, अब डेट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, बाद में 90 मेंबर्स कहाँ चले गए? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान चले गए। तो कितने बचे? 389 में 90 माइनस करेंगे तो कितना हुआ? 299। तो इतने मेंबर्स बचे बाद में इंडिया में। और फाइनली जो साइन, जितने मेंबर्स ने साइन किया यहाँ पास डॉक्यूमेंट को, दैट वाज 284। ओके, नाउ कुछ एग्जाम्स में ये भी पूछा गया, जैसे यूपीएससी ने तो नहीं पूछा लेकिन यूपी पीसीएस ने पूछा है, जैसा कि हु मेड द ड्राइंग्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन? सो हु मेड द ड्राइंग्स? नंदलाल बोस। ठीक है, तो ये थे जिन्होंने ड्राइंग्स बनाई है। तो बहुत अच्छी ड्राइंग्स है, आप गूगल कर सकते हैं उन इमेजेस को, कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की इमेजेस को, बहुत अच्छी ड्राइंग्स है। ठीक है,
Now, very important sub points here. That is, what have been the sources of the constitution? ठीक है? What have been the sources of the constitution? तो इसको हम करते हैं sources of the constitution. ये भी कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है. सोर्सेज ऑफ मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कई जगहों से, दुनिया के कई कॉन्स्टिट्यूशन से कई प्रोविजंस जो है बोरो किए हैं. तो कौन से प्रोविजन कहां से बोरो किए हैं, हमें वो चीज यहां जाननी चाहिए. ठीक है, इस चीज को याद रखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में बनता है और 1947 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है तो इंडिया से पहले बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाए गए थे, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए गए थे. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का आप कह सकते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पहले ही कर लिए गए थे. समझ रहे हो इस बात को? तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी स्टेज में बन रहा था जहां पास एक्सपेरिमेंट्स को लेके अगर कोई सवाल है तो वो बहुत पहले आंसर किए जा चुके हैं बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स की विजडम है कि उन्होंने इसको अपने ईगो का या अपने किसी प्राइड का इशू नहीं बनाया, बल्कि बहुत ओपन माइंडेड वे में उन डिबेट्स को, उनके एक्सपीरियंसेस को, दूसरी कंट्रीज में जो सवाल खड़े किए गए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान, उन सवालों को, उनके आंसर्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया और बाद में अच्छा एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स के अकॉर्डिंग हमारी खुद की लोकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है. ओके, तो एक जो क्रिटिसिज्म, हालांकि मैं उनको बाद में बताऊंगा, मेरा अभी शुरू की स्टेजेस में मेरा स्ट्रेस रहेगा कि आपको सबसे बेसिक पॉइंट्स यहाँ पास बताता जाऊं. ये चीजें बाद में आएंगी. जैसे एक क्रिटिसिज्म कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पैच वर्क, मतलब कि कुछ यहाँ से ले लिया, कुछ वहां से ले लिया और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया गया. तो इसको आंसर करते हुए, मतलब ये सवाल खड़ा हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक्चुअली, और वहां पास डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको रिस्पॉन्ड किया था कि भाई हम एक ऐसी स्टेज में, ह्यूमन हिस्ट्री के एक ऐसे स्टेज में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे हैं जहां पास कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत पहले हो चुके हैं. तो अगर ये एक्सपेक्ट किया जाए कि हम बिल्कुल एक नए सिरे से दुनिया का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर देंगे जो कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशन से किसी भी तरह से सिमिलर ना होगा, तो वो एक बहुत इम्प्रैक्टिकल बात है. मैं उन्होंने जो बोला था उसको मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, मैं मीनिंग कन्वे कर रहा हूँ आपको. ठीक है, आप जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट में अम्बेडकर के लिटरली उन्होंने क्या बोला था वो समझने के लिए, जो एग्जैक्टली वर्ड क्या थे उनके. तो मैं वर्बैटिम कोट नहीं कर रहा हूँ. ओके, तो उनका ये एम्फेसिस, उनका एक्चुअली मतलब ये था कि भाई हम ऐसी स्टेज में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे हैं ह्यूमन हिस्ट्री के जहां पास कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को लेकर बहुत ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं. कुछ एक्सपेरिमेंट फेल हुए हैं, फेल होने के बाद उसको सुधारा गया. तो बहुत सारा डिबेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और केस स्टडीज ऑलरेडी है. और ऐसे पॉइंट में हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाना कि हम दुनिया में एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे और वो दूसरे तीसरे चौथे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल मेल नहीं खाएगा या कोई ऐसा फीचर नहीं होगा जो कहीं और नहीं पाया जाएगा, ये एक बहुत इनप्रैक्टिकल विश है. ओके, और लास्टली उन्होंने कहा था कि इफ यू कॉल इट अ पैच वर्क देन इट इज अ गुड पैच वर्क. ठीक है, तो ये थी बात इस क्रिटिसिज्म की कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पैच वर्क है. ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. ठीक है, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. सोर्सेज में आप कह सकते हैं वेरियस सोर्सेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बारो किया है दूसरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने. दे हैड टेकन क्यू फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वेरियस कंट्रीज. लेकिन सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस अगर आप देखेंगे, almost 70% of the structure of the constitution
of India has actually taken from the Government of India Act 1935. बहुत बड़ा हिस्सा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही है। तो मतलब यहाँ तक कि सर समझिए कि पूरा फेडरल स्कीम जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, फिर बहुत सारी दूसरी स्कीम्स, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इमरजेंसी प्रोविजंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इमरजेंसी प्रोविजंस में फंडामेंटल राइट्स की सैक्रोसैंक्ट नेचर को खत्म करना, एक्चुअली ये कह सकते हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट सिंपल टर्म्स, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वीमर रिपब्लिक, जर्मनी। ओके, वीमर रिपब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो जर्मनी में उससे लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप की अगर बात करें, सिंगल सिटीजनशिप, तो ये कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगेन ब्रिटेन। ठीक, फिर जो आपका लेजिस्लेशन का प्रोसेस है, आप ऐसे कहें कि प्रोसीजर फॉर मेकिंग लॉज और लेजिस्लेशन का जो प्रोसीजर है, ये भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट्स, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट, यूएसए का कॉन्सेप्ट, यूएसए से लिया गया। ओके, देन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये कहां से लिया गया? ये आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, ये चीजें जो है, हालांकि जैसे आप यहां पास ये देखें कि प्रोसीजर फॉर लेजिस्लेशन ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, हालांकि क्या है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से कैसे अलग है, ये सब चीजें आगे आएंगी, क्योंकि मैं पूरा कोर्स ही कराने वाला हूं आपको। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है जापान से। ओके, तो ये चीज याद रखना है आपको। ठीक है, फिर प्रियम्बल, मैंने आपको बताया कि प्रियम्बल यूएसए से, यूएसए से और कौन सी चीजें हैं? प्रियम्बल के अलावा यूएसए से फंडामेंटल राइट्स हैं, और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी भी यूएसए से ही है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी भी आप बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, फिर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी यूएसए से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू थोड़ा फैक्चुअल चीजें हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है आपको। फिर यूएसए से और भी बहुत चीजें हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए से जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल ऑफ जजेस, यू कैन से रिमूवल ऑफ जजेस of Supreme Court and High Court, both have been taken from USA. Okay, और भी बहुत चीजें हैं सब। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट आपका क्या है? प्रेसिडेंट इन योर केस, ऑल्सो इन योर केस, इज द एग्जीक्यूटिव हेड, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, और ये कॉन्सेप्ट भी यूएसए से लिया गया है। ओके, और आपका, हालांकि आपने अभी सब पढ़ा नहीं है, इसीलिए हो सकता है, अगर आपने पढ़ा नहीं है, अगर आप बिल्कुल नए हैं इसके लिए, तो
ये सब चीजें बिल्कुल नहीं लग सकती। जैसे फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट, यू माइट बी नोइंग दैट इन आवर केस इट इज द ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। तो vice president by virtue of his office is the chairman of Raj Sabha. Now this very feature has also again been taken from the USA's constitution only. फिर यूएसए के बगल में जो कनाडा है उधर से भी हमारा कुछ चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फेडरेशन की बात अगर करें कि इंडियन फेडरेशन का जो सिस्टम है, तो इंडियन फेडरेशन जब हम पढ़ेंगे फेडरेशन के कॉन्सेप्ट को, तो देखेंगे कि इट हैज अ स्ट्रॉन्ग टिल्ट, और यू कैन से अ टिल्ट टुवर्ड्स सेंटर। Okay, although there is federation, no doubt about that. Various experts, for example, Granville Austin, then Ivor Jennings, Livingstone, D.D. Basu, all have uh, accepted that Indian constitution is a federal constitution, but it has a tilt towards center. It is tilted towards center. Okay, क्योंकि बहुत सारे ओकेजन्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी हो जाता है। ये सारी चीजें हम देखेंगे आने आने, लेकिन ये इन काइंड ऑफ फेडरेशन दैट वी हैव व्हिच हैज अ टिल्ट टुवर्ड सेंटर, दिस फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, दिस इज कॉल्ड फेडरेशन विद strong center. This has been taken from again USA. I'm sorry, it has been taken from Canada. ओके, तो कनाडा से ये लिया गया। और एक और चीज देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है, तो मतलब सेंटर की तरफ टिल्ट है। अब आगे आप पढ़ेंगे या फिर आप जानते होंगे, अगर आप रिवाइज करने के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आप जानते हैं इस चीज को कि देयर इज समथिंग कॉल्ड रेजिड्यूरी पावर्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपका शेड्यूल 7 है, जहां पास यूनियन लिस्ट है, जहां पास यूनियन के पास पावर होती है। स्टेट लिस्ट है, जिन आइटम्स में स्टेट के पास पावर होती है लेजिस्लेशन की। फिर कॉन्करेंट लिस्ट है, जहां पास यूनियन और स्टेट दोनों कॉन्करेंटली पावर एंजॉय करते हैं उन आइटम्स में लेजिस्लेशन की। जो आइटम्स कहीं भी लिस्टेड नहीं होते उनको बोलते हैं रेजिड्यूरी आइटम्स, और रेजिड्यूरी आइटम्स के ऊपर जो लेजिस्लेशन की पावर होती है उसको बोलते हैं रेजिड्यूरी पावर्स। रेजिड्यूरी पावर्स यूएसए में स्टेट्स के पास होती है, लेकिन कनाडा में ये पावर सेंटर के पास है। और इंडिया में क्या हाल है? इंडिया में भी रेजिड्यूरी पावर कहाँ बिलोंग करती है, किसको बिलोंग करती है? सेंटर को। ओके, तो उस केस में रेजिड्यूरी पावर सेंटर के पास है। ये फीचर भी कनाडा से ही लिया गया है। ठीक है, रेजिड्यूरी आइटम्स किसको बोलते हैं? रेजिड्यूरी आइटम्स उनको बोलते हैं जो शेड्यूल 7 में लिस्टेड नहीं है। वो सब्जेक्ट्स जो शेड्यूल 7 में नहीं है उनको बोलते हैं रेजिड्यूरी पावर्स। ठीक है, अब कुछ चीजें और हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं अभी कॉन्करेंट लिस्ट की बात आई थी, तो कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई? कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजन लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फिर एक और चीज है, फॉर एग्जांपल इंडिया इज अ रिपब्लिक। इंडिया इज अ रिपब्लिक, और रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, समझ में आया आपको? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, और जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ यहाँ पास मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट में अगली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डिफरेंस क्या है?
तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज पार्लियामेंट, ओके, विच विल कंसिस्ट ऑफ Lok Sabha and Raj Sabha and President. Okay, so there you see that there is Lok Sabha and Raj Sabha. Okay, Lok Sabha and Raj Sabha. So Council of Minister, which is headed by Prime Minister, ये concentric circles मैंने आपको बताया था. This circle is actually the part of Lok Sabha and Raj Sabha. So Council of Minister headed by Prime Minister is the part of Parliament. So every minister here is also a lawmaker. Every single minister. हालांकि एक प्रोविजन है कि जो आरएस या एलएस का पार्ट नहीं है वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बन सकते हैं, वो भी मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन उसे फिर 6 महीने के अंदर ये मेंबरशिप पानी पड़ेगी. ओके, लेकिन वो सब डिटेल्स बाद में आएंगी. कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि एवरी मिनिस्टर इज ऑल्सो अ लॉ मेकर. ओके, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बड़ा क्लियर कंपार्टमेंटलाइज्ड सेपरेशन होता है. जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गई प्रेसिडेंशियल सिस्टम में. यहाँ पास एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, यहीं पास इसको गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं आप. ओके, तो ये सब डिफरेंट नाम है, नेम्स हैं इसके एग्जीक्यूटिव के. In this system, presidential system, there is strict separation of power. Here, separation of power is actually in a sense diffused. Why? Because executives are also performing the function of legislation, because minister is also a lawmaker. But here you have a clear, very strict separation of power between legislature, executive and judiciary. Okay, so here in this system, minister is never going to be a lawmaker. Minister here, that is council of minister, which is actually being decided by the president, is not going to be a minister, you can say, is never a lawmaker. ओके, तो ये सेपरेशन जो है, इट इज वेरी टाइट, वेरी क्लियर एंड टाइट सेपरेशन है. ठीक है, तो यहां मतलब क्या निकलता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव इज कंप्लीटली सेपरेटेड, और यू कैन से कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम लेजिस्लेचर. कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम लेजिस्लेचर. गेटिंग इट? तो अगर हम समराइज करना चाहें इस चीज को कि व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम and what is presidential system, तो आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. ठीक है, एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, दैट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर हैं वो लॉ मेकर भी होते हैं. ठीक है, और यहां पास क्या होता है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर they are completely separated. Okay, they are completely separated. Getting it? फिर नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो सकता है कि यहां पास जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स
they will always be from parliament only. Okay, so in that sense they will always be part of legislature. तो मतलब यहाँ पास पॉइंट आपका यहाँ पास एक्चुअली कवर हो गया है, लेकिन अम, इसका मतलब यहाँ पास ये है कि दे विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ नॉट जस्ट लेजिस्लेचर, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि दे मस्ट एक्वायर द मेंबरशिप ऑफ parliament. If they are not part of parliament, they must acquire the membership of parliament within 6 months. ठीक है, समझ रहे हैं? और अगर इस केस को यहाँ पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखा जाए तो क्या है यहाँ पास, तो मिनिस्टर्स जो हैं वो मिनिस्टर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। members of parliament or you can say legislature। तो कहां से बनते हैं मिनिस्टर्स? मिनिस्टर्स आर एक्चुअली चूजन बाय द प्रेसिडेंट। तो कह सकते हैं आप प्रेसिडेंट चूजेस द मिनिस्टर। ओके, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये सिस्टम यूएसए में बहुत क्लियर वे में आपको दिखेगा और ये सिस्टम इंडिया में है। ठीक है, अच्छा, इसके आगे और भी क्या कहा जा सकता है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि अगर आप देखें कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है यहां पास, तो इसको ऐसे देखिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है। यहाँ पास क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है, ही इज एक्चुअली द हेड ऑफ द COM, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल। ओके, और यू कैन से एग्जीक्यूटिव, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड गवर्नमेंट। ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो इसीलिए PM को हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है, क्योंकि ही इज एक्चुअली द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव, दैट मेक्स हिम ऑल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट। ठीक, तो इंडिया में यही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या है? प्राइम मिनिस्टर मोदी है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंट कोविंद क्या है? हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर होता है, दैट इज एक्चुअली द रियल हेड। ओके, व्हाइल president, who is the head of the state, is only a nominal head, you can say, only a nominal head। ठीक, while presidential form of government में क्या होता है? presidential form of government में क्या होता है कि president is the president who is the executive head। तो यहाँ पास executive head कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पास executive head होता है president। ठीक है, और ना सिर्फ इतना, बल्कि कहना चाहिए कि president here is head of the government because he is the executive head, and head of the state also, head of the state also। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है और हेड ऑफ द स्टेट भी होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को? और 2015 में यूपीएससी ने जो प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछा था यहाँ पास, वो ये था कि काउंसिल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं। तो उसमें जो आंसर, जो अल्टरनेटिव थे, उसमें आंसर्स में था, जो करेक्ट आंसर था वो एक्चुअली ये कन्वे कर रहा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज एक्चुअली अकाउंटेबल टू लोकसभा और पार्लियामेंट। ठीक है, तो वो एक्चुअली पार्लियामेंट्री सिस्टम का
जो खूबी है उसको हाईलाइट कर रही है एक्चुअली। तो हम यहाँ पास उसी की बात करेंगे थोड़ा सा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप कह सकते हैं कि parliamentary form of government actually it emphasizes on, or you can say it puts emphasis on concept of, or you can say the aspect of responsibility. ठीक है, responsibility of whom? Responsibility of executive. So executive क्या है, यहाँ पास बहुत ज्यादा अकाउंटेबल होते हैं, because they have to answer to the parliament. Actually काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट करती है, उसका बेसिस होता है कि वो पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस एंजॉय करती है, पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस एंजॉय करती है, ठीक है। और पार्लियामेंट उससे लगातार क्वेश्चन पूछता है, और पार्लियामेंट का अगर कॉन्फिडेंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लूज कर देती है तो वहां पास प्राइम मिनिस्टर along with council of minister needs to resign. समझ रहे हो आप इस बात को? समझ रहे हैं? तो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव जो है, आप पार्लियामेंट से यहाँ पास मेन मतलब जो है पॉपुलर हाउस से है। पॉपुलर हाउस आपके यहाँ कौन है? आपके यहाँ पॉपुलर हाउस है लोकसभा। सो अकाउंटेबिलिटी एक्चुअली पूरी की पूरी पार्लियामेंट के लिए नहीं है, वो मेनली और स्पेसिफिकली लोकसभा के लिए, विच इज द पॉपुलर हाउस इन योर कंट्री। ओके, सॉरी गेटिंग इट। So parliamentary system, because council of minister exists because of the parliament's confidence on it, will not survive if parliament loses the confidence of council of minister. For maintaining the confidence, what strategy parliament generally adopts is questioning the council of minister continuously. So council of minister, in order to enjoy the confidence, or in order to ensure that it enjoys the confidence of parliament in continuous manner, needs to actually satisfy the parliament every time through answers of the questions that have been posed to it by the parliament, especially the popular house. Okay, in that sense, this very mechanism makes council of minister very accountable. So you can say that parliamentary system of government puts a lot of emphasis over the accountability of the government, or accountability of the executive. Here in this case, accountability of council of minister headed by prime minister. But the moment it loses the confidence of parliament, it needs to resign, and that is why you see that although this parliamentary system brings about a great deal of accountability, but that may also turn out to be unstable. ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव क्या हुआ कि अकाउंटेबिलिटी है, और नेगेटिव क्या हुआ कि ये अनस्टेबल होता है, सिस्टम हो सकता है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें आप, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो स्ट्रेस है, जो फोकस है, ये एम्फेसिस आप कहें कहाँ है, वो है स्टेबिलिटी में इंस्टेड ऑफ अकाउंटेबिलिटी में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने एक बड़ी क्लियर चॉइस थी which they needed to make, whether to go for accountability or stability. But understand that they have facing, or they have actually witnessing the ramifications, or you can say the bad effects of unaccountable government in form of British Raj. So it is very natural for them to have a tilt towards accountability rather than stability. Getting it? मतलब हमने एक बड़े निरंकुश, बड़े अथॉरिटेरियन
राज्य को देखा है ब्रिटिश राज के फॉर्म में, जो बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं था। तो ये एक बड़ी सामान्य बात है कि कहें कि ये बड़ा सामान्य है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए ये सोचना या इस तरफ टिल्ट रखना कि वो सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेबल बनाना चाहेंगे, इवन एट द कॉस्ट ऑफ स्टेबिलिटी. Okay, so there is a whole history to it. The time when they were writing the constitution, they had this whole history of unaccountable government in form of British Raj, and that is why they went on opting for accountability over the stability. Okay, and finally they came forward with this parliamentary form of government. Getting it? So in case of presidential system, there is an emphasis on stability rather than accountability. Okay, I'm not saying that there is no accountability of the government there, but the tools, the mechanisms that exist before the parliament there, before the legislature there, to make the executive accountable, they are very cumbersome, they are very tedious. Okay, and that is why the kind of mechanism that is available in parliamentary system for the legislatures to make or to keep the council of ministers, that is executive, accountable all the time, that is missing in presidential system. So accountability in that sense gets compromised, and that is being compromised for the sake of stability, you can say here. Are you getting it? So this is the difference between parliamentary system and presidential system. And I also told you that why our constitutional makers went for the parliamentary system of governance. Although you will find increasing, or you can say, an in emerging debate here that we should start thinking about adopting presidential system. Okay, so before 2014 election, actually, um, and even right from the 80s, you can see the time when we started witnessing the instability in the parliamentary system, because of one very important reason behind that was that our coalition culture is not still mature. Although the calculus completely changed after 2014 election, that is why you see a declining debate with respect to the system of president. The Prime Minister Modi, even when he is accountable to the Parliament, is being allegedly has been allegedly adopting the authoritarian tendencies. So he has been called an authoritarian leader. So even being a prime minister, even as a prime minister, he has been read by certain section of experts that he has authoritarian tendencies like Mr. Trump. Okay, as we see, uh, as we have seen in case of Mr. Trump, that he has been called authoritarian president, or president with a great deal of authoritarian tendencies. But before 2014, right from 1980s, you will find a literature whereby a great section of scholars, a great section of experts have been proposing for the adoption of presidential system in India. Okay, so this was about another basic concept, that is parliamentary system and presidential system. Again, these are going to come in detail. Okay, we are going to see all that in much detail later also. Here I'm dealing just with the basic concept, so that when I start the polity here with the preamble, you could understand everything that will be explained. Okay, so that is why I need to cover all the basic concepts. Now I will talk about majorities. There are various kinds of majorities, so I will be talking about majority. Let us see that what are different kind of majorities that are there in Indian Constitution. Okay, let us see majority then, or types of majority. Okay, let us see types of majority. There are
four kinds of majority. The first is simple majority. Simple majority. Okay. And what is simple majority? By simple majority means that you can say that if number of votes, you can express it like this, that if number of votes favoring any particular issue, or you can say proposal, it is more than the number which number? The number which is calculated or which can be considered, then that proposal is considered to be passed. Okay, that proposal is considered to be passed. ठीक है? So why I'm saying which is calculated, now understand it through example. Understand it. I will erase it and then I will explain you the example of simple majority. Understand that, for example, in any situation, on any day in Parliament, if I consider the case of Lok Sabha, then if 50% of members are present and voting, okay, if this is the case, and for example, if you consider the case of Lok Sabha, then you know that there are 545 members. Okay, so 50% of members present and voting would be considered a simple majority. Okay, अगर नहीं समझ में आया तो आराम से सुनिए. मतलब मैंने सिंपल मेजॉरिटी कैसे एक्सप्लेन किया कि if number of votes which are favoring any particular issue is more than the number which is calculated, okay, this is what I said, then the issue is or proposal is passed. If it is not, then proposal is defeated. This would, in a say, for example, would mean that it is simply 50% of the members present and voting. Okay, it would mean 50% of the members present and voting. ठीक है? अब more than the number which is calculated, अगर आप नोट कर रहे हैं मेरे पॉइंट्स को, तो उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. ठीक है? देखिए, इसको लाइटली मत लीजिएगा जो डिस्कशंस मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको नोट करना चाहिए प्रॉपर्ली यहाँ पास. ठीक है? Okay, so for example in LS there are 545 members. Okay, and in any day there 100 members are absent. Okay, 100 members are absent. So what is the remaining number of members? 445. So simple majority in that case would be what? 445 का 50%. But it can also happen that say 45 members did not vote. वो लंच कर रहे थे, बस वो खाना पीना खा रहे थे, बाहर चाय पी रहे थे, वो नहीं आए वोट करने. तो नंबर कहाँ हो गया? नंबर कितना हो गया? 400. So this number which is calculated, अगर आपने definition में ध्यान दिया तो this is actually a number which is calculated. Okay, now 50% of this number, तो क्या होगा? 200.
तो अगर 201 मेंबर, अगर 201 मेंबर्स किसी प्रपोजल को सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, तो उस दिन उस पार्लियामेंट, उस लोकसभा में वो इशू पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 545 मेंबर्स में 100 तो एब्सेंट थे और 45 बाहर चाय पी रहे थे, उन्होंने वोट नहीं किया, तो क्या कितने बचा? 400। ये था, दिस इज नंबर विच इज कैलकुलेटेड। गेटिंग इट? ठीक है, समझ गया आप? चलिए, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ओके। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी? इस चीज को समझो। इट इज 50% of total membership of the house. Okay, that is, for example, if I take the example of Lok Sabha, then you know that Lok Sabha की strength कितनी है? 545. So 50% of 545, ठीक है। इसी तरह राज्यसभा में होगा, तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? 245। तो उधर क्या हो जाएगा? 50% ऑफ 245। अब कितने नहीं आए, कितने नहीं वोट किए, इससे मतलब नहीं है। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है उस सेंस में? क्या है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज ऑलवेज अ फिक्स्ड नंबर। ओके, इट इज ऑलवेज अ फिक्स्ड नंबर। गेटिंग इट? बिकॉज 50% of 45 is a fixed number. 50% of 245 will also be a fixed number. ओके, अब कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी हम बाद में देखेंगे पॉलिटी में जब आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। लेकिन है क्या, जब मैं बोलूँ कि इट विल रिक्वायर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हियर। ओके, अंडरस्टैंड अगेन। इफेक्टिव मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी देखिए, इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, इट इज 50% ऑफ टोटल membership of the house minus vacancies. While voting took place, while voting was conducted. तो 50% किसका? 50% इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का। जैसे फॉर एग्जांपल, ये वैकेंसीज किसकी वजह से हो सकती है? वैकेंसीज बहुत वजह से हो सकती है। हो सकता है किसी ने रिजाइन कर दिया हो सकता है कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई कर गया हो, हाँ? या फिर डेथ भी इसका रीजन हो सकता है, तो वो वैकेंसीज कॉज हो जाएंगी वहां पर। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअली क्या है? इट इज एक्चुअली, इफ यू सी हियर, then it means that it is the majority of, you can say, the then membership, the then members of the house. है ना? क्योंकि उस टाइम मेंबरशिप कितनी है हाउस की, उस पर्टिकुलर मोमेंट में मेंबरशिप कितनी है हाउस की। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में तो ये देखा ही नहीं जाता था कि कौन वैकेंसीज है कि नहीं है, वो जितना नंबर है उसका 50%, ओके, उसमें +1 ऐड कर दोगे आप, तो वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो जाएगी। समझ रहे हो? ठीक, तो ये हुआ इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक, अच्छा,
अगर इफेक्टिव मेजोरिटी ये है तो फिर लास्ट टाइप ऑफ मेजोरिटी जो है वो समझिए कि अब बात आती है स्पेशल मेजोरिटी की स्पेशल मेजोरिटी की। What is special majority? Special majority is, it can be expressed as such as like this: 2/3 of total membership of the house. ओके, ये कई तरह की होती हैं, मतलब जिसमें चौथा है ये स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और आगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबसे सिंपल तरीका जो लिखा जा सकता है इसका वो है कि इट ऑल्सो मीन्स which should be supported by more than 50% of the total strength of the house. ओके, समझ गए आप इस बात को? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये हुआ 2/3 of the total membership of the house present and voting. ओके, तो जैसे आपने क्या देखा था, सिंपल मेजोरिटी में देखा था, इसीलिए मैं सोच रहा था कि आप थोड़ा सा इसको शुरू से ही समझे। सिंपल मेजोरिटी में आपने देखा था इट इज द 50% ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो उसमें 50% देखा था, यहाँ पास 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और सपोर्ट किसका होना चाहिए और किसका होना चाहिए? 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, दैट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। गेटिंग इट? तो मतलब 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, और 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ क्या है, हमने सेकंड वाले केस में पढ़ा है, वो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, है कि नहीं? वो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ओके, समझ रहे हो आप इस बात को? जैसे फॉर एग्जांपल, इसको इसको एक एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल किसी दिन लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, अब उसमें से 45 एब्सेंट है, जैसा कि हमने फर्स्ट वाले केस में लिया, 45 एब्सेंट है, और 100 लोग जो हैं वोट नहीं करते हैं, तो दे एब्सटेन फ्रॉम द वोट, दे डिड नॉट वोट। 100 डिड नॉट वोट, ठीक है, 100 डिड नॉट वोट, 45 और एब्सेंट। तो कितने बचे? 545 में 45 गए, 500 में 100 ने एब्सटेन कर लिया, वोट नहीं किया, तो कितना बचा? 400, ठीक है। So how many members were present and voting? It is 400. So 400 members were present
एंड वोटिंग। इसका 2/3 होगा कितना? इसका 2/3 कितना होगा? इसका 2/3 होगा 2/3 ऑफ 400, 800 बाय 3। ओके, समझ रहे हैं आप इस बात को? ओके, प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ओके, और एक्चुअली ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है, ये है मेजॉरिटी आर्टिकल 368 के अंदर, विच इज द टफेस्ट मेजॉरिटी टू अटेन। ठीक है, एक्चुअली मैंने आपको बताया सिंपल मेजॉरिटी के बारे में, फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बारे में, फिर इफेक्टिव मेजॉरिटी के बारे में, फिर बताया स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में। और ये जो एग्जांपल दिया मैंने आपको, ये है स्पेशल मेजॉरिटी में भी टफेस्ट स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में। ठीक है, एक्चुअली बाद में चीजें आएंगी, लेकिन चलिए ठीक है, अगर आप बात यहाँ कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं कि आप पास एक्चुअली स्पेशल मेजॉरिटी भी कई तरह के होते हैं। तो देर आर एक्चुअली 4 काइंड्स ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, चलिए देख लेते हैं आप। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको और देखता हूँ। तो मैंने आपको पहले बताया सिंपल मेजॉरिटी के बारे में, ठीक है, 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। फिर बताया एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बारे में, इसमें कितना हुआ? 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, फिर बताया इफेक्टिव मेजॉरिटी के बारे में, ओके, और इफेक्टिव मेजॉरिटी में मैंने बताया 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज। ठीक है, याद है। फिर मैंने बताया स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में, और स्पेशल मेजॉरिटी में एक्चुअली 4 वैरायटी होती है। मैं अभी नहीं जाना चाहता था, लेकिन कहीं और पढ़ के कंफ्यूज ना हो जाए। तो स्पेशल मेजॉरिटी में 4 कैटेगरी होती है, और 4 कैटेगरी में चौथी कैटेगरी मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, तो एक्चुअली स्पेशल मेजॉरिटी 4 तरीके की है, और 4 तरह की ये कैटेगरी अलग अलग आर्टिकल में मिलती हैं। तो चलिए देख ही लेते हैं कि 4 की चारों काइंड की स्पेशल मेजॉरिटी क्या है। तो स्पेशल मेजॉरिटीज which are of 4 types, let us consider type 1. Okay, type 1, and this type 1 majority is actually mentioned in article 249. ठीक है, अब ये क्या है आर्टिकल 249, वो बाद में आएगा। अब जैसे इसमें क्या है स्पेशल मेजॉरिटी में कि according to this particular article, the special majority which is required is this, that it requires 2/3 of the members present and voting। ठीक है, तो जैसे सिंपल मेजॉरिटी में आपने देखा था 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, आर्टिकल 249 में होता है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक, अच्छा, अब देखते हैं टाइप 2, टाइप 2 ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। और टाइप 2 ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी है, आप कह सकते हैं आर्टिकल 368। ठीक है, और ये चीज मैं आपको एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन वो टाइप 2 में मैं इंक्लूड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, देखती है। इट मीन्स दैट majority of 2/3 members present and voting, मतलब इसका स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होगा? 2/3 members present and voting, supported by
more than 50% of total strength. ठीक है, total strength of the house. और इसका मैंने एग्जांपल आपको दे दिया. ठीक. अब देखिए स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3. ये क्या होती है एक्चुअली? ये स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3 है वहां पास. ये भी आर्टिकल 368 में मिलती है, लेकिन उस केस में जहां पास स्टेट के रेटिफिकेशन की भी जरूरत होती है. Okay, so these are actually the articles which are related. The amendment was the provision of the constitution which are related to the federation, and the amendment in those provisions will require the ratification of states also. सब कुछ देखेंगे आपको आगे सब मिलेगा ये. तो इसमें क्या होता है कि it is 2/3 of members present and voting. ठीक है, supported by more than 50% of state legislature. Okay, and this 50% of state legislature जो proposal को पास करेंगे वो किससे होगा? सिंपल मेजॉरिटी से. मतलब स्टेट जब प्रपोजल को पास कर रहे होंगे 50% ऑफ स्टेट्स जो अपने घर में अपने स्टेट्स में प्रपोजल को पास करने होंगे उसके लिए जो जरूरी होगी वो सिंपल मेजॉरिटी होगी. और पार्लियामेंट में जब ये होगा तो 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का होगा. ठीक है. अब है स्पेशल टाइप ऑफ मेजॉरिटी, स्पेशल टाइप मेजॉरिटी टाइप 4. स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 4. ओके. और ये एक्चुअली आर्टिकल 61 में मेंशन्ड है. डोंट वरी, वी आर गोइंग टू कवर एवरी आर्टिकल हियर. ओके, एंड दिस रिक्वायर्स 2/3 of the members of the total strength. ठीक. तो इस केस में ये बहुत टफ हो जाती है, एक्चुअली टफेस्ट हो जाती है. मैं मिस्टेक हुई मुझसे यहाँ पास कि मैंने दूसरे केस को टफ बोल दिया. एक्चुअली टफेस्ट तो यहाँ पास ये निकल जाएगी. ठीक है ना, अगर आप इसको देखेंगे. दिस इज टाइप 4, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द. अगर मैंने लास्ट टाइम सेकेंड काइंड ऑफ मेजोरिटी को, सेकेंड टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी को टफेस्ट बोल दिया था. दैट वाज अ मिस्टेक. ओके, सो लोकसभा में आप समझिए कि 545 मेंबर्स हैं. ठीक है, और 2/3 अगर ये स्पेशल मेजोरिटी टाइप 4 अगर चाहिए होगी तो कितना हो जाएगा ये? इट विल बी 2/3 ऑफ 545. ओके, 262 पॉइंट समथिंग, तो 363 हो जाएगा. प्लस 1 करेंगे, दिस विल बी 364. ठीक है. और राज्यसभा में यही चीज देखी जाए तो 245 इंटू 2/3.
163.2, or you can say 81.6 into 2, that is 260 plus 1, it will be 164. ठीक है, 164, 163 इसको ले सकते हैं राउंड फिगर में, तो ये हो जाएगा 163 प्लस 1 164। तो 364 आता है ये लोकसभा के केस में, और 164 आता है राज्यसभा के केस में। ओके, सो दिस वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज। ठीक है, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं फेडरेशन और यूनिटरी के बीच में डिफरेंस। ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन एंड फेडरल एंड यूनिटरी। ओके, दो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पास, फेडरल एंड यूनिटरी। ठीक है, तो इसमें फर्क क्या है? मेनली फर्क है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, किस तरह का फर्क है कि अगर फेडरेशन की अब बात करेंगे तो फेडरेशन में देयर एग्जिस्ट टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट आर दोस टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, और यू कैन से नेशनल लेवल गवर्नमेंट एंड सब नेशनल गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ भी यूनिटरी में भी सब नेशनल गवर्नमेंट होती है, लेकिन खास बात यहाँ पास क्या है फेडरेशन की, कि फेडरेशन में जो सब नेशनल गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी, या फिर टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो होंगे वो नन ऑफ द गवर्नमेंट, नन ऑफ द फॉर्म्स यू कैन से इज inferior to the other. Getting it? Why they are not inferior? Because both forms, that is national government as well as सब नेशनल गवर्नमेंट, उसके नीचे जो है both forms of the government क्या करते हैं, they derive authority from the constitution. Getting it? They derive authority from the constitution. ठीक है, are you getting it? So because they derive authority from the constitution, हालांकि मैं पहले भी इस चीज के बारे में थोड़ा बताया हूँ, हालांकि आगे भी फिर से आएगा, because they derive authority from the constitution, that is why you can say that both in if you compare the authority there, both forms of government are going to be equally authoritative, none is going to be inferior to the other. Okay, लेकिन अगर आप यूनिटरी सिस्टम की बात करें, यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम होता है कि देयर एग्जिस्ट एक्चुअली वन सुप्रीम गवर्नमेंट एंड दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसको नेशनल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं या नेशनल लेवल में गवर्नमेंट बोल सकते हैं। फिर उसके नीचे सब नेशनल गवर्नमेंट्स भी होती है, but this national government is the supreme government, the supreme form of government. Okay, now what is the meaning of national level government being supreme form of government even when there are sub-national government? That means that in that situation you can say that sub-national governments they will be acting like, you can say they will be acting like administrative arms, you can say.
They are like administrative arms of the government, of the superior government और central government. ओके, तो यहाँ सब नेशनल गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट जैसे होंगी, तो ये दे आर लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स की. यहाँ पास मेन बॉस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट्स के लेवल में, सब नेशनल लेवल में कौन है, दूसरी टाइप की गवर्नमेंट है, जो अपनी अथॉरिटी, अपने पावर्स कहाँ से डिराइव करेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से. ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम. ठीक है. अच्छा, क्योंकि सब नेशनल गवर्नमेंट्स दे आर एक्टिंग लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, they will be actually taking direction by the central government. So everything, every important thing that they will do so only by getting directed by the central government. तो यहां पास एक्चुअली अगर मैं पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखूं मैं, so that distribution of power that exists here is not the power that has been given by the constitution to the subnational government. The powers that these subnational governments will be enjoying will be the kind of, or you can say will be in form of delegated power. Getting it? Delegated power. ठीक. अच्छा, और भी डिफरेंसेस हैं, देखते हैं. और देखिए, फेडरल पॉलिटी में क्या होता है. इन अ फेडरल पॉलिटी यू कैन से this will require what? As you have already understood that this will require a written constitution. This will require a written constitution. Okay. And this written constitution must necessarily divide, or you can say distribute the power between national and subnational या नेशन के नीचे जो है लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को. ठीक है, और constitution in that sense will remain supreme. Constitution will remain supreme in this case. Getting it? Now this will remain supreme with respect to what? With respect to division of power. ठीक है. सी फेडरेशन के जो आप लक्ष्मीकांत वगैरह में जो पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल separation of rigidity of the constitution, supremacy of the constitution, independence of the judiciary, bicameralism. Okay, ये सारी चीजें आप जो पढ़ते हैं written constitution, all that is only with respect to the division of powers. So जैसे फॉर एग्जांपल written constitution feature, so only that part of the constitution needs to be written for a federal polity. Only that part of constitution needs to be written with which deals with distribution of power. अगर बात करें rigidity of the constitution की, जो भी फिर से दूसरा फीचर है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, only that a part of the constitution needs to be rigid which deals with division of power. Other part of the constitution might be flexible. That is not going to disturb the scenario here. Okay, getting it? Now again, if you say that supremacy of the constitution, again this is required only with respect to the division of power, where the constitution deals with the division of power. In other areas, constitution might not remain supreme. That is not the concern.
then you can say that judiciary is independent, or independence of judiciary. Independence of judiciary. There also, that is required only with respect to the division of power. Again, in other areas, judiciary might not be that independent. Getting it? So, this very fact or this very aspect, that is the division of power, is actually the central point here. Okay? I think you understand it well now. और इसीलिए जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हो रिजिड हो with respect to the division of power. ठीक? लेकिन अगर अनरिटन, अगर यूनिटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पास क्या हो सकता है? It can be a written constitution or it can be unwritten constitution. ठीक? Then it generally is found to be flexible only. Okay, why? Because flexible constitution generally give rise to unitary system. Getting it? Because unwritten constitution is generally what? Flexible. Getting it? अगर कंफ्यूज हो गए तो फिर से सुनिए कि यूनिटरी सिस्टम जो होगा, यूनिटरी सिस्टम में यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का सवाल है, तो ये रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है. ठीक है? जहां कॉन्स्टिट्यूशन के रिटन या अनरिटन होने का सवाल है, तो ये रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है. ठीक है? लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जनरली फ्लेक्सिबल होगा. तो वो यूनिटरी सिस्टम जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है, वहां पास कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा. समझ गए? ठीक, चलिए आगे चलते हैं. तो फिर मैंने बताया कि फेडरल सिस्टम में क्या है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना जरूरी है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना जरूरी है. Why independent judiciary is required for federation or federal polity? Because see, constitution ने तो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेंटर और स्टेट्स के बीच में. ठीक है? लेकिन हो सकता है सेंटर आर्म ट्विस्टिंग मेजर्स अपनाने लगे, स्टेट्स प्रेशराइज करने लगे, पावर को इनक्रोच करने लगे. उस टाइम क्या होगा? उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के उन प्रोविजंस का वो वायलेशन कर रहा होगा जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है. ठीक है? समझ रहे हैं आप? और अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा? फिर उस रॉन्ग डूइंग को करेक्ट करने के लिए जुडिशरी की जरूरत होगी. लेकिन जुडिशरी अपना काम यहां पास सही तरीके से तभी कर पाएगी जब क्या हो? वो इंडिपेंडेंट हो. ठीक है? इंडिपेंडेंट. Only then it can actually act as a neutral arbitrator. A neutral arbitrator of disputes. समझ गए? So I think understood it. ठीक है? और अगर यूनिटरी सिस्टम की बात करें जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लेके, तो यूनिटरी सिस्टम में आप क्या देखेंगे?
कि all the powers, all powers are with whom? All the powers are with central legislature. ठीक है, या आप कह सकते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट के पास. और उस केस में जुडिशरी इट इज नॉट लाइकली टू बी वेरी स्ट्रांग, और यू कैन से जुडिशरी माइट नॉट बी वेरी स्ट्रांग. At least against whom? Against central legislature. ठीक है. Are you getting it? Okay. So this is about federation या federal polity और unitary polity के बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है. अब अगर ये डिफरेंस है जो अभी हमने सीखा, तो अब हमें पता करना है कि इंडियन केस में या इंडियन केस फेडरल है या यूनिटरी है. इतना तो आप जानते हैं कि हाँ ये फेडरल है, लेकिन इसके फेडरेशन का नेचर क्या है, मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ फेडरेशन. This is something that we are going to study. Okay, so let us see what is the nature of Indian Federation, or federation in India. Okay, let us start the nature of Indian federal system. Okay, why this debate? First of all, it is so because there are many experts who believe that Indian Constitution is federal. Okay, many experts are there. Their opinion is that Indian Constitution is or Indian Constitution, or you say Indian polity, is federal. Okay. Whereas there are other experts who say that no, it is quasi-federal. Quasi-federal वर्ड आपने कई बार सुना होगा. इसका सिंपल मतलब है कि quasi-federal means half federal. It is half federal, not full federal. It would mean that not fully federal. Okay, understand why this. For example, Kishi Weir calls it quasi-federal. Understand, federation is an issue. बेसिक्स तो मैं आपको बता दिया यहाँ पास, 2-3 बार हो गया बेसिक्स बताने का. Actually, when you study D.D. Basu, he tells you about the federation. So federation, in context of federation, D.D. Basu says that there exists a general tendency among the scholars here, scholars and experts, that whenever they try to find out
whether any constitution is federal or not, they start comparing it with the constitution of the most you can say the oldest constitution, the federal constitution in modern times, that is the constitution of USA. Okay, constitution of USA. And D.D. Basu says that these scholars, when they try to compare any constitution with USA's constitution to find out whether any constitution is federal or not, according to such scholars, the extent of similarity with USA's constitution will also decide the extent of फेडरेशन. मतलब ये है कि स्कॉलर्स के हिसाब से कोई कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है कि नहीं, वो इस बात से पता चलता है कि वह यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के कितना सिमिलर है. समझ गए बात? ये डीडी बसु कह रहा है. एंड ही फर्दर सेज दैट दिस टेंडेंसी is incorrect. This tendency is not correct. Getting it? Why it is not correct? Because there are scholars like, for example, Livingstone. When you will study D.D. Basu, you will study all that. मैंने दो किताबें आपको पढ़ने के लिए बोली है. एक है सुभाष कश्यप ने दो किताबें लिखी हैं. एक है आवर कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है आवर पार्लियामेंट. दोनों पढ़ने हैं आपको. ओके. और फिर मैंने डीडी बसु के स्टार्टिंग के 10-12 चैप्टर्स पढ़ने को बोले हैं. ठीक है. अगर आप इतना करते हैं तो आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी. लिविंगस्टोन का कहना है, लिविंगस्टोन इज एन स्कॉलर हु हैज बीन quoted by डीडी बसु in his book. He says that federation is a functional concept. Is a functional concept rather than an institutional one. It is not institutional. That would mean that institutions are not going to decide whether any particular constitution is federal or not. Okay. And when scholars compare any constitution or the constitution of any country with the constitution of USA, they are actually comparing the constitutional design. And this constitutional design or the comparison of the constitutional design becomes the comparison of the institutions. The problem with this approach is this, that institutions are, even if they are same by design in two different countries, country A and country B. So for example, there is an institution which is there in country A, which finds its origin in the constitution of country A, and there is another institution in country B, again finding its origin in the constitution of country B. The function of the constitution, functions of the same institution, आप कह सकते हैं, they will vary, they will be different. In two different settings. Okay. So when such scholars compare the constitution of any country with the constitution of USA, they are actually comparing the institutions. And Livingstone provides a reason that this tendency is incorrect because the same institutions will be having different functions in different countries. So ultimately, the debate
turns out to be not of institutions but of functions. Okay, but of functions. And for this reason, Livingstone says that federation becomes a functional concept rather than an institutional one. And this is the reason why, with the question whether any polity is federal or not, the comparison of any constitution with the constitution of USA is not correct. Because federation does not just depend upon the institutions. The same institutions can come to acquire different roles, different functions in different settings. And for that reason, federation becomes a functional concept. And then you can say that it is not about institutions. Federation is not about institution. It is all about how those institutions evolve practically. So what are the functions they are performing in different settings? Okay. So the practical evolution of the institutions on the ground will decide whether any particular polity is federal or not. Okay? Are you getting it? So federation in that sense is a functional concept rather than an institutional one. And when KCBA calls Indian Constitution to be a quasi-federal constitution, in a way he is actually taking the same line that the scholars of comparative politics belonging to legal institutional approach have followed. And this legal institutional approach, whereby comparison is made between the institutions, has gone obsolete way back in 1980s. समझ रहे हैं? तो जो कॉन्सेप्ट या जिस लाइन ऑफ थॉट से वेयर ये कंक्लूड करते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लाइन ऑफ थॉट एकेडमिक्स में बहुत पहले ऑब्सोलीट हो चुकी है. समझ रहे हैं आप? अच्छा, अगर ऐसा है कि फेडरेशन इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन से नहीं पता किया जा सकता कि किसी कंट्री में फेडरेशन प्रैक्टिस किया जा रहा है कि नहीं, तो किससे पता किया जा सकता है कि उन इंस्टीट्यूशंस का फंक्शन क्या है. और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके केस में गवर्नर का, द ऑफिस ऑफ गवर्नर. ये सब सारी एनालिसिस आप बशु ने प्रोवाइड की है. गवर्नर का ऑफिस क्या है? When the office of governor was envisaged by your constitutional makers, they considered it to be the linchpin of federation, something that will bring cooperation between center and states. That was the original thinking behind the office here. But the same constitution, the same position. So, for example, even the constitutional makers did not provide for any special kind of eligibility for the governor. There was a debate in the Constituent Assembly where it was proposed that this office should be made as an elected office, but later the debate was settled in favor of this post becoming a nominated post rather than being a elected post, because Council of Minister headed by Chief Minister is already an elected body. And there, if governor also becomes an elected office, then there can be a chance, or you can say there can be occasions of conflict between the governor and chief minister. So ultimately, the Constituent Assembly decided that governor should be a nominated position. Okay, but
If you see the Constitutional Assembly debates, you will find that the whole assembly was of the opinion that a convention will develop in future, that only the person of eminence or person of repute will only be appointed as governors. But now see, you have seen the cases of appointment of governors in polity, whereby in most of the occasions this office has been used by the center as the arm twisting tool with respect to the states. Okay, that is why whenever a new government comes into being, the first thing that it actually does, it changes the governors in especially in opposition ruled states. Okay, why so? Because through the office of the governor, center tries to actually coerce states in various ways. And in that sense, the office of governor has has been has become such that governor is being called the agent of center. So instead of becoming the linchpin of federation, that is the linchpin of cooperation between center and state, as was originally thought by your constituent assembly, the constitutional makers in your case, the office of the governor or the governor of the position itself has become such that he is being called the agent of the center. Okay, so an office which was to bring about the cooperation between center and states in that sense was to decentralize, because it is going to fulfill, or it was expected to bring about, or you can say promote, the spirit of federalism in your country. And federalism by definition is decentralizing. The working of the governor has shown that it took a centralizing turn. The very same office which was thought of which was expected to promote federalism or the spirit of cooperation between center and state, turned out to be a centralizing one. Okay, this is a very good example that how legal institutional approach of comparative politics and comparative constitutional study, whereby scholars indulge in comparison to the extent that they start um, concluding about the federation of any country or any polity or any constitution by comparing it, by literal comparison, by making the literal comparison with with the constitution of USA. The tendency is incorrect. Okay, and this is very good example there. Getting it? What I mean to say is this, that the very tendency of comparison is incorrect. So, in order to find out whether Indian polity is federal or not, we need to stress over, or we need to dwell upon the functioning of the institutions rather than the design of the constitution. But if the question is about constitution, that whether constitution is federal or not, then for the sake of argument we can confine ourselves to the provision of the constitution and make our debate limited, in the sense that we are just concerned whether the most basic premises of the federation are being fulfilled by the constitution or not. And that is something that we are going to do here. But in response to those critics who call that Indian constitution is a half federal, quasi federal, our Supreme Court has very clearly said that federalism is the very basic feature of Indian constitution. Okay, so you might be knowing about the doctrine of basic feature. अगर आप इन चीजों को नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा
पूरा डिस्कशन देखिए, पूरी सीरीज देखिए, सब कुछ जान जाओगे। ओके, मैं बहुत बेसिक से हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पास कवर करूंगा। तो उनके रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपके केस में कि फेडरलिज्म इज one of the basic feature of the constitution. Now if it is the basic feature of the constitution, you know this if you know about the doctrine of basic structure. uh, you know this, that if it is part of the basic structure of the constitution, then it cannot be changed even by the amendment. That is the last ruling we have by the 13 judges in case 1 of the Bharati case. Okay. Okay. Now let us find out whether how Indian Constitution is federal. Okay. So our next discussion is about how Indian Constitution is federal, or you can say how Indian Constitution or Indian polity Constitution is federal. Getting it? Okay. So first feature is this, that Indian Constitution is a written constitution. Okay. And for federation it is necessary that the constitution needs to be written. That it exists, that would mean that it should exist in codified form or codified manner. Getting it? So India having a written constitution actually supports a case, or you can say it favors the opinion here that yes, India is a federal constitution. Okay. Second, if you see your textbook here, the Indian polity, it says that there should be division of power. And in India also, there is a division of power. But let us analyze it. For any federal setup, a written constitution is necessary, that you saw. And in written constitution, along with written constitution, it is also required that there should be two forms of government, central government and sub-central, or you can say the states. So that at least two forms of government. Although federation goes beyond the states also. So it will cover everything, national as well as sub-national units. Okay. So that is my point here, that there can be different kinds of federation. Okay. And it is the constitution, now understand, you have already understood it, that constitution should actually divide the powers between center and states. And the division should be like this, that no form of government should look inferior or should become inferior to the other part of the government, or should not become subordinate to the other. Rather, a kind of cooperation or coordination, you can say, coordination is expected here. Okay. And this division ensures that the different forms of government are supreme in their own spheres. Getting it? They are supreme in their own spheres. Now, this can happen only when
those powers that they have been enjoying, that is the center and the state government, have been derived from the constitution, and they are being authorized by the constitution, which is the written one. Okay, and this is also to be found in Indian case, and that is why this very provision is also making a case for India being a federal polity. Okay, next. Now, for federation, it is also required that the constitution should be supreme. Okay, or you can say supremacy of the constitution is required. Supremacy of the constitution is required. Why? Because in any federal system, constitution is going to be binding over both forms of government, that is center as well as states. Okay, and why so? Because neither, that is center, or state, that is national or subnational, neither of them should be in a position to change the structure of constitution on its own or on their own. Okay, at least this much must be ensured, that all the federal features of the constitution, those federal features will mainly relate to the distribution of power between center and states. Those federal features should not be allowed to get changed unilaterally, neither by center nor by state. Okay, and it is especially in those areas that the constitution needs to be supreme. Getting it? Not only it needs to be supreme, it also needs to be rigid. So that becomes the next criteria, that the rigidity of the constitution should also be there for a federal setup. It should not be easy to amend the constitution, especially with regard to those features which deal with the division of power between center and states. Okay, I think this is clear. Okay, now understand that the next point can be that whether Indian constitution is rigid or not. Okay, so Indian constitution is rigid with respect to those provisions which deal with the federation, or you can say the distribution of power. Okay, and you will find that there are specific 5 areas that I'm going to tell you about. 5 areas which deal with this distribution of power between center and states. Not only that, they also are the most important areas related to federation in your country. And if those provisions are, those 1, 2, 3, 4, 5 provisions are to be amended, then it is very tough to amend them. How? Because first the amendment has to be brought by the parliament. Okay, and that needs to be passed by special majority for these 5 provisions that I'm going to tell about. And then at least 50% of the states
should approve the amendment, although by simple majority, and then only that kind of amendment is sent to the president for presidential assent. Okay, so those 1, 2, 3, 5, 4, 5 provisions that deal with the federal part here, that I'm going to give you the detail about it, will come within few minutes. It is very tough to change, to amend those provisions, because it will require not just the special majority by the central legislature, but it is also going to require the concurrence of at least 50% of the states. That proves that for changing those provisions which are related to federation, a cooperation between center and state is required. Without the cooperation and coordination, no change can happen here. This proves the case, or this actually strengthens the case or claim that yes, India is a federal constitution, or India is a federal polity. Okay. Now, what are those provisions? Those 5 cases which deal with the division of power. That is something that we are going to see. Okay. So let us see this. The first case is, we are going to cover 5 cases here. The first case is the case of Schedule 7. A very clear case, or you can say the example of federation, that is the distribution of power. Here you have 3 lists here. Union list is there, which has 99 items. Then there is state list, which has 61 items. And then there is concurrent list, which has 52 items. Okay. Now, in these 99 items, it is the union government which can make laws. In these 61 items, it is the state government which can make laws. In 52 items in the concurrent list, both central states can make laws. See, the central list is separate, union list is separate, and this means that there is division of power. Okay. So, in order to amend this particular schedule, 2/3 of the members present at voting, that is a special majority of the kind where 50% states concurrence is also required. Okay, so that makes it very important. Understand? Then the second provision is, this is the first case, and the second case is related to representation of states in parliament, and that is about Raj Sabha, okay, or you can say Raj Sabha seats. Okay, we are going to see that in detail afterwards. Then see the third case. I am discussing the 5 cases, or 5 occasions, or the 5 areas where a special majority of a kind, where 50% states concurrence is also required to amend the constitution. So if any of these 5 measures are to be amended, the cooperation and coordination between center and state is also required.
and that makes a case for India being a federal polity. Okay, so understand the third case here. It is about Supreme Court, which is there in chapter 4, chapter 4 and part of part 5. Okay, and also High Court, which is chapter 5, part 6. Getting it? You can also include chapter 1 of part 11, which is about legislative relations between center and states. Okay, this is the third case. So here, with respect to higher judiciary also, neither center nor states alone can go for any kind of change or amendment unilaterally. States we do not need to worry much about, but center is something that can actually cause a problem, but that has also been contained. Okay, by making a provision that 50% states concurrence is also needed to bring about any change here. Okay, now see the next case. That is fourth case. And fourth case actually includes things like election of president. Okay, election of president. Then you can also say extent of executive power. Executive power of center. Then the same thing, extent of executive power of states. Okay. You can also talk about, say, for example, Article 241, which deals with high courts in union territories. Then the most recent one, that is Article 279, that is GST Council. I'm sorry, 279A, that is the correct article. I just amended the constitution. Okay. Getting it? Again, these are the special cases where if and at all any amendment is brought, that amendment will be successful, or that constitution amendment will making or in having this purpose of making any change here in these cases will actually become act only when it is being concurred by the at least 50% of states. Okay. Now consider the fifth case here. Fifth case. And this is about the language. Language of Article 368. Okay. Now this cannot be changed without the approval of both center and states, or you can say at least half of the states. Okay. So again, it will require coordination, cooperation, and approval of both, between and both of center as well as
states. Okay. Now let us see that what are the other features. So, for example, if you consider the case of, say, authority of courts here, हम कौन से क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं? क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं कि हाउ इंडिया इज फेडरल. तो हर उस केस को हम देख रहे हैं जो फेडरेशन का फेडरेशन के बेसिक टीरियड्स में आता है और वो इंडिया में है कि नहीं. ओके. तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें हमने देखी यहाँ पर डिस्कस की. ठीक है. रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये देखा कि कौन से प्रोविजंस, वो प्रोविजंस जो फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, उनमें अगर चेंजेस लाने हैं तो क्या करना होगा. उनमें अगर चेंजेस लाने हैं तो सेंटर और स्टेट्स दोनों का कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन चाहिए होगा. ठीक है. अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स की अगर बात करें, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ फेडरेशन. नाउ इन अवर केस और इन एनी केस where federation is to be practiced, or you can say in any federal polity, for the resolution of disputes that sometimes arise between center and states, especially, or you can say mainly, or you can say in our debate it is precisely over the of power distribution of power, or you can say the limits of power. Okay. Now for all these reasons, for all these, there should be what? There must be an authority of courts. Okay. Now authority of courts here would mean that courts, or you can say judiciary, is independent. Okay. Now in authority of courts here, does not just simply mean that center states are not interfering, or you can say are not making any change with respect to the independence of judiciary. Okay. Independence of judiciary is not only with respect to center and states, but it would also mean, that courts, or you can say at least the higher courts, should be given, or you say they should be given the power. Power for what? Power for the interpretation of the constitution. Interpretation of the constitution. Now you know that this is leading to something called judicial review, interpretation of the constitution. And not only that also again, but this interpretation should be binding. It should be binding on center as well as states. And if you talk about such code in India, I don't think that you have any problem concluding that it is Supreme Court of India. Okay? Supreme Court of India. So I think this is clear.
Now let us see next. So after making a case of India being a federal polity, we are interested in knowing that what are the unique features of Indian Federation. Okay, unique features of Indian Federation. इंडिया के केस में, इन फेडरेशन के केस में यूनिक क्या है? अब फिर ये कहें कि हाउ इट इज डिस्टिंक्ट, हाउ इंडियन फेडरेशन इज डिस्टिंक्ट or different from other federations. Okay, so for example, federation of that you find in USA or you find in Australia, how Indian federation is different. Okay, so let us first understand that, as I have already told you, that the federation of especially USA and also of Australia, they are actually considered as the most ideal, especially USA is considered the most ideal version of federation. So much so that scholars have, have been comparing any constitution, the constitution of any country, with USA's constitution to find out whether that constitution is federal or not. Okay, so they are in a way considered as the benchmark of federation. Okay, or you can say as reference points. For the same reason, those comparisons are drawn. Okay, now understand that in many occasions you will find that Indian federation or the federation Indian polity differs from the federal designs that you are able to see in countries like USA. Okay, so for example, very clear difference here is this, that in country like USA, for example, all states have their own constitution. States there have their own constitution. Okay, not only that, they have their judiciary. So judiciary is also not integrated as we have in India. A pyramidical integrated judiciary that we have in India, that is not there in USA. All the states have their flag also. Okay, their anthem also. Okay, then you also have dual citizenship in USA. There is a dual citizenship. So an American citizen is a citizen of USA as well as a citizen of that particular state. Okay, and these states also have their own machinery to hold the elections. Okay, आपके केस में क्या है? इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स है, ठीक है, और वो स्टेट्स में भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चुनाव होते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराता है उसे. ओके, लेकिन यहाँ पास यूएसए में उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, स्टेट्स का खुद की जुडिशरी खुद की, इन द सेंस कि दे डू नॉट हैव दिस इंटीग्रेटेड pyramidal structure of judiciary that we find in India. That is option there. Okay, then there is flag also, anthem also. Not only that, they have dual citizenship also, and then finally they also have their own election machinery or machinery for conducting elections. जबकि इंडिया में क्या है, इंडिया के केस को अगर आप देखते हैं तो India does not have Indian states do not have their own judiciary. They do not also, all of them also do not have flag or national anthem, or you say in that case it will be state anthem.
ओके, और सिटीजनशिप, ये सारा कुछ नहीं है। ठीक है, एक आध एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप सारी स्टेट्स को कंसीडर करें तो दिस इज नॉट समथिंग दैट वी हैव इन इंडिया। ओके, अच्छा, तो इसमें फिर डिफरेंस ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स इन्हीं बातों के ऊपर से, फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स, बिकॉज दे डू नॉट हैव दीज वेरी प्रोविजंस, दे आर एक्चुअली स्टार्ट seeing these features as something which makes the states inferior to center, or you can say which makes the center superior to the states. Okay, फिर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाकई यूनिटरी टेंडेंसी एक्वायर करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज, अब इन सब के बारे में पढ़ेंगे आप। 3 kinds of emergencies are there. Which are they? National emergency, then president's rule, and then financial emergency. And center in such occasions can actually acquire a dominating role over the states. Okay, and for this reason sometimes it may lead to the dilution of the federal principle or federal polity or federal spirit, because center becomes dominating, okay, domineering over states. Getting it? इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है जरूरत के हिसाब से यूनिटरी भी है और फेडरल भी है. Understand the context here. Why constitution makers were proposing this kind of system. See, when India became independent, so you can say at the eve of your independence, at the eve of जब आजाद हुआ भारत, so there was various fissiparous or secessionist tendencies that existed in various parts of the various regions of the country. The challenge here was to how to hold these fissiparous or these regions having fissiparous tendencies together, and that is why we cannot, the constitution makers at that time were of the opinion that India cannot afford to give any kind of opportunity to any section which could promote or at least motivate these tendencies or fissiparous tendencies. Okay, ये बिल्कुल चांस ही नहीं दे सकते थे हम. जब इंडिया आजाद हुआ तो बहुत सारी ऐसी टेंडेंसी एग्जिस्ट करती थी कि देश से अलग होने की या देश के डिवाइड होने की. तो बहुत बड़ा चैलेंज था कि पूरी कंट्री की इंटेग्रिटी को मेंटेन कर पाना. ओके, उसको संभाल के रख पाना, ये चीजें थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे केस में. और उसी को सिक्योर करने के लिए, इंटेग्रिटी को सिक्योर करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए ये जरूरी था कि स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स भी होने चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके, so for some reasons that I just told you, it has been designed, the constitution has been designed to function both as federal constitution as well as unitary constitution in different occasions or according to the requirement. Okay, as per the requirement of the time,
it may acquire both dimensions, that is federal as well as unitary. ओके, एक चीज और ध्यान दीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिटिसाइज किया गया है। क्रिटिसाइज इस बात के लिए किया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने शेप को, अपने कैरेक्टर को चेंज कर लेता है या चेंज करता है। मतलब द शेप एंड कैरेक्टर of Indian Constitution keeps on changing. Okay, and this becomes one factor why it is being criticized, or it has been criticized. Getting it? Okay. अच्छा, अगर इसको देखें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने शेप और अपने कैरेक्टर को चेंज कर लेता है ओकेजन्स के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये अपने आप में कोई क्रिटिसिज्म का पॉइंट नहीं है, या ये कहें कि ये कोई फ्लॉ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, इट इज नॉट अ फ्लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कमी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की, बल्कि ये खासियत है। ये खासियत क्यों है कि इंडिया की यूनिकनेस, मतलब इंडिया का और इंडिया यूनिकनेस जो है, और यूनिकनेस वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है हर फेस में। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल, कितना वेरिएशन है। हमारे यहाँ दुनिया के सबसे हॉटेस्ट टेरिटरीज भी हैं और सबसे वेट टेरिटरी भी है। दुनिया में जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है उनमें से कुछ जगह हमारे यहाँ है राजस्थान में, और दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है यही मौसम नाम में। ओके, कल्चरल डिफरेंसेस है बहुत ज्यादा। देन हिस्टोरिकल और सोशियो हिस्टोरिकल फैक्टर्स बहुत पीछे जाते हैं और बहुत सारे कस्टम्स ट्रेडिशंस को जन्म देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सोसाइटल फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, all that make India a very unique case. And your constitution makers were actually aware of this uniqueness of India as a country. Getting it? And that is why they came out with a design of the constitution which could adopt both unitary as well as federal character. For example, various historical regions whereby it was also required to bring about and coordinate with all the princely states that went beyond 500 number. So in total they were somewhere around 560 to 565. Getting it? And many of those princely states did not want to join India. Many of them were not willing to join India. So Indian Federation in that sense is a kind of attempt whereby through symmetric and asymmetric features and provisions, an attempt has been made to secure the integrity of the nation. Because at the time of independence, India faced very difficult situation. Getting it? That difficult situation was most visible in case of, say, for example, Hyderabad, Junagadh, Jammu and Kashmir, then insurgency northeast. All those factors prevailing in the 1950s and 60s
which ultimately led to the rise of insurgency in Northeast. Okay, so we were so diverse when it came to culture, physical geography, economy, etc., that we did not or we could not have gone for a system whereby states or the subnational units enjoyed autonomy to the extent that they could secede from the union. No, that was something that we could not have given the states the power to decide. Okay, I think this is clear. See, another very important feature of the constitution whereby parliament can unilaterally change the name, area, or boundary of the state, and that it can do without even getting the consent of the state. This provision that is mentioned in Article 3 of the Constitution, okay, this makes our case again a kind of unique one whereby states are destructible in our scheme. Okay, so by Article 3, whereby Parliament can unilaterally, that is on its own, can change the name, area, and boundary of the states without even getting the consent of the state. That makes our states the destructible ones. Okay. Now, with the same logic, if you compare Indian Constitution with American Constitution, you would say that American Constitution creates a mechanism whereby states are indestructible, or you can see in USA states are destructible unit of indestructible union. Okay, states are destructible union of indestructible union. Okay, but in case of India, states are destructible units. In USA, states are not destructible units; they are indestructible unit of indestructible union. Okay, ठीक है इस बात को समझ गया आप? Because states are destructible, that is, their name, area, boundary, or anything can be changed by the parliament unilaterally without getting their consent. That makes, or you can say, these exist as an independent unit of federation, the states there. Okay, unlike in Australia or USA, where states are having their own identity. Okay, I think this is clear. Next, you can talk about Schedule 7 of the Constitution, which actually distributes the power, the legislative power to be more precise, uh, that is among the federal, that is among, or you can say between the center and the states. And that makes India appear federal, or you can say that makes India, that makes a very strong case for India to look federal or to be federal. It is not just about the appearance of federal. But I am not saying that this very schedule is without any flaw. Getting it? Because if you analyze the Schedule 7 of the Constitution that existed in right from the beginning of the Constitution, there have been various additions made in this particular list. Okay,
Okay. So if you start analyzing the Schedule 7 that you had in the original constitution, there you saw that the number of items which were kept in the union list, they have been continuously increasing, and the number of items that were kept in the state lists, that have been continuously decreasing. Okay, getting it? Now understand one more thing about Schedule 7 of the Constitution. Let us understand. Apart from that, you can say I'm sorry, that list 1, that is the union list, also carries, or it has, the largest and the most important largest number of subjects, that is one, and also the most important subjects of legislation. Okay, so it carries the most important subjects of legislation. Most important subjects of legislation. And these actually also allows the center to collect more tax revenue. Okay, and because of this Schedule 7, and because of this union list, center enjoys, or you can say is able to collect more revenue, that is one, and it also enjoys greater share in financial resources, of which tax revenue is just one part. And when you consider concurrent list, then you can see that in concurrent list also you will see, after a time when we'll see the exact provisions here, that Parliament enjoys the sovereignty, or you can say superior. It actually, Parliament's claim is superior there. While if you see the state list of Schedule 7, then it contains basically the points or the items related to local importance. Items of local importance. Okay. And even in those items which are reserved for a state list, state or state governments there do not enjoy the exclusive jurisdiction. So the jurisdiction is not exclusive here. Getting it? There is no exclusive jurisdiction. What does it mean? That even in these cases, in these items which are there in the states list, center can interfere in these areas. For example, there are 5 areas, or the 5 occasions you can say, or conditions. 5 conditions are there where Parliament can make laws even in the state list, that is this list 2. Now we are going to see those five areas or 5 conditions. Are you getting it? तो पहला कि आप अगर हिंदी में समझें तो यूनियन लिस्ट पहले बड़ी है, नंबर्स में बड़ी है. ओके, नंबर ऑफ आइटम्स वहां ज्यादा है. फिर उसमें इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं वो इंक्लूड करती है, और उसकी वजह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज में भी यूनियन का कंट्रोल ज्यादा है. एक चीज तो ये यूनियन लिस्ट के बारे में हो गई, और जिसका बारे में स्टेट कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब कि उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो यूनियन लिस्ट में जो आइटम्स है उनके ऊपर वो लेजिस्लेशन ला सके. अब स्टेट लिस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ आइटम्स आर आल्सो लेस, देन ऑल दोज आइटम्स आर ओनली ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस. देन इवन इन दोज आइटम्स विच इज देयर इन स्टेट लिस्ट, वो भी आइटम जो स्टेट लिस्ट में है उनमें भी जो जुरिस्डिक्शन है स्टेट्स का वो एक्सक्लूसिव नहीं है. मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट ही उसमें, हालांकि वो स्टेट लिस्ट के आइटम्स है, लेकिन तब भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट ही उसमें जो है कानून बना सकते हैं. 5 ऑकेजन्स, 5 कंडीशंस ऐसी हैं जहां पास पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में भी
क्या कर सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है। ओके, देखते हैं वो 5 कंडीशंस कौन सी है। देखिए 5 कंडीशंस में पहली कंडीशन है या पहला ओकेजन है आर्टिकल 249, आर्टिकल 249। ओके, now according to this article, you can say under this article, Raj Sabha. Okay, so if Raj Sabha, Article 249 says that if Raj Sabha passes a resolution, okay, by which or by majority, and majority here is of a special kind, whereby it is not less than 2/3 of the members present and voting, अगर इस मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करती है और रेजोल्यूशन में होता है कि इट इज इन नेशनल इंटरेस्ट, quote unquote national interest, that parliament legislates or parliament must legislate over the state subject or the items listed in list 2 of the schedule 7, getting it, then parliament actually comes to acquire the legislative jurisdiction over state list also. अगर आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग अगर राज्यसभा नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट वोटिंग के साथ, इस मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करती है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि पार्लियामेंट लिस्ट 2 दैट इज स्टेट लिस्ट के ऊपर लेजिस्लेट करे, तो वो क्या करेगा, वो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। 5 कंडीशंस में पहली एक कंडीशन ये, मतलब एक ग्राउंड जो तैयार होता है जहां पास पार्लियामेंट भी स्टेट को ओवरराइड करके स्टेट लिस्ट के आइटम्स में लेजिस्लेट कर सकती है, वो ये है। ठीक है, दूसरा आप समझें, दूसरा आइटम कि आर्टिकल 250 आर्टिकल 250 है। आर्टिकल 250 में क्या है कि इट इज अबाउट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी what happens, parliament actually assumes a concurrent legislative power। समझ रहे, पार्लियामेंट के पास क्या आ जाती है, कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव पावर आ जाती है और स्टेट लिस्ट दैट इज लिस्ट 2। कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव पावर मतलब स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट के आइटम्स में लेजिस्लेशन कर सकती है, लेजिस्लेशन कानून बना सकती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन रिलेट करती है आर्टिकल 252 से। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इफ 2 or more states, 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लेजिस्लेचर अगर एक रेजोल्यूशन पास करें और उस रेजोल्यूशन में ऑथराइज कर रहे हो, इफ दैट इज ऑथराइजिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ओवर स्टेट सब्जेक्ट्स, समझ रहे हैं, 2 या 2 से अधिक स्टेट जो है रेजोल्यूशन पास करें किसके लिए, पार्लियामेंट को ऑथराइज करने के लिए कि वो स्टेट सब्जेक्ट्स में लेजिस्लेट करे, मतलब स्टेट आइटम्स में कानून बनाए, तो भी पार्लियामेंट उन स्टेट लिस्ट के आइटम्स में कानून बना सकती है। ओके, मतलब उसका ज्यूरिसडिक्शन स्टेट सब्जेक्ट्स में भी आ जाता है, लेकिन ये ज्यूरिसडिक्शन लिमिटेड होता है उन रिक्वेस्टिंग स्टेट्स के लिए जिन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था। ठीक है, वो बाकी स्टेट्स में नहीं अप्लाई होगा।
मतलब यहाँ पास 2 या 2 से अधिक स्टेट्स ने ये रेजोल्यूशन पास किया, ये कि पार्लियामेंट को ऑथराइज किया रेजोल्यूशन पास करके कि वो स्टेट सब्जेक्ट्स में कानून बनाए, तो पार्लियामेंट कम्स टू एक्वायर, वो मतलब वो एज्यूम कर लेती है पावर को, किसके जुरिस्डिक्शन को, स्टेट आइटम्स में भी, स्टेट लिस्ट के आइटम्स में भी कानून बनाने के लिए। ओके, लेकिन ये प्रावधान, ये कानून जो पार्लियामेंट बनाएगी स्टेट आइटम्स में, वो किन स्टेट्स में लागू होगा या किन स्टेट में वो एप्लीकेबल है, वो वही उन्हीं स्टेट्स में एप्लीकेबल है जिन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को ऑथराइज किया था। ओके, समझ रहे हैं आप इस बात को? तो मेरे ख्याल से ये तीसरा स्टेज हो गया। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, तो ये तो हुआ प्रेसिडेंट रूल के बारे में, लेकिन प्रेसिडेंट रूल जब इम्पोज होता है, व्हेन यू कैन से व्हेन प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड, तब क्या होता है? तब होता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंडेड हो जाती है और उसके बाद डिसॉल्व हो जाती है, और सस्पेंडेड और डिसॉल्व होने के बाद इट इज द पार्लियामेंट, okay, that is central legislature, which acquires, or you can say it assume कर लेती है legislative jurisdiction on state list. Okay, that is list 2. ठीक है, तो ये 5 occasions हैं आपने देखे जहां पास क्या कहना चाहिए कि central legislature, that is parliament, assumes the power or the jurisdiction over the states to legislate on list 2 also. समझ रहे हो आप? ओके, ओके, तो हमारा डिबेट शुरू हुआ था एक्चुअली, जहां हम बात कर रहे थे, वो थी डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन और हाउ इंडियन फेडरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फेडरेशन। ठीक है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने शेड्यूल 7 की बात शुरू की, और शेड्यूल 7 के बाद हमने देखा कि कैसे अलग अलग ओकेजन्स में एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी भी रखता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उसी कॉन्टेक्स्ट में एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टिकल 248। ठीक है, तो आर्टिकल 248 बात करता है रेजिड्यूरी पावर्स की। ओके, और रेजिड्यूरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन, रेजिड्यूरी पावर्स किसको बोलते हैं? उन आइटम्स में लेजिस्लेशन रखना, उन आइटम्स में लेजिस्लेट करना जहां पास जो आइटम्स किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं किए गए हैं, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में अगर आइटम्स नहीं है, उनको बोला जाता है रेजिड्यूरी पावर्स। ओके, अब ये रेजिड्यूरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन जो है वो किसको बिलोंग करता है? दैट बिलोंग्स टू पार्लियामेंट। ठीक, दैट बिलोंग्स टू पार्लियामेंट। ठीक, अब रेजिड्यूरी पावर्स एक बफर लिस्ट की तरह है, मतलब सेंटर, या कहें इससे कि सेंट्रल लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, या खासकर इस केस में गवर्नमेंट, इसको एक बफर लिस्ट की तरह मेंटेन करके रखता है। यहाँ कुछ भी जरूरत पड़ी, चलो रेजिड्यूरी पावर्स, ये रेजिड्यूरी पावर में आता है, ये मेंशन नहीं है यहाँ पास। तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स जो मेंशन नहीं है। ओके, और जैसे गवर्नेंस का स्ट्रक्चर चेंज होता है, इवॉल्व होता है, अब दुनिया में हर एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स तो नहीं इमेजिन करके रखे होंगे। बहुत सारी चीजें हैं, साइबर क्राइम है, दुनिया का पोर्नोग्राफी है, पता नहीं क्या क्या है, तो वो सारी चीजें अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तो नहीं सोच के इमेजिन करके रखी होंगी, है ना, कि भाई ऐसा कुछ भी होगा फ्यूचर में।
ठीक है, बहुत कुछ उन्होंने सोचा, लेकिन दिस इज बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटी टू इमेजिन एवरीथिंग हियर। ओके, तो ये चीज यहाँ पास, वो सारे पावर्स कहाँ चले गए? सेंटर के पास चले गए। ठीक है, सारे पावर्स सेंटर के पास चले गए। ठीक है, फिर और प्रोविजन देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोविजन है कि गवर्नर, नाउ गवर्नर राइट्स अ रिपोर्ट टू द सेंटर। हर 15 दिन में एक रिपोर्ट देता है, 15 डेज में। ओके, अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द स्टेट, कि भाई स्टेट में कामकाज कैसा चल रहा है। और गवर्नर अगर ये बोल दे, मतलब गवर्नर अब ये जो रिपोर्ट देता है हर 15 डेज में, अगर गवर्नर यहाँ पास लिखता है कि मतलब इफ गवर्नर राइट्स दैट स्टेट मशीनरी हैज failed, then this becomes a ground for the imposition of president's rule. Understand? And this provision of the constitution, which actually depends upon the discretionary power of the governor, because it will depend upon the interpretation of the governor whether state machinery has failed or not, has been misused, abused various times, okay, by the center. Because understand, this actually gives Indian constitution a very centralizing, or you can say there is a strong tilt towards unitary feature here, because center governor in this case can actually effectively stop the lawmaking process or the lawmaking machinery of the state. Yes or no? Through this provision, he can actually he can bring into standstill this very functioning of the state legislature. He can freeze it. Okay. फिर देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 155 है, 155. Now this article is about governor appointed by the president. Okay, governor is appointed by the president, who holds office during the pleasure of the president. This is important. During the pleasure of the president. Okay, during the pleasure of the president. मतलब क्या है कि जब तक राष्ट्रपति खुश हैं तब तक गवर्नर काम करेंगे. और president, you know, is the nominal head in your case, who acts in the advice of council of minister, which is headed by prime minister. So this during pleasure of the president actually essentially becomes the pleasure of the government. Yes, pleasure of the government. And now effectively it becomes a case that governor acts during the pleasure of the president, pleasure of the government. गवर्नमेंट खुश है तो गवर्नर होगा. गवर्नर अगर गवर्नर के ऊपर थोड़ा दिमाग खराब हुआ तो उसको हटा देंगे, भगा देंगे. ठीक है, अगर ऐसा है, then I don't think that it will be problematic for you to conclude here that governor in that case will definitely come under the influence of
इन्फ्लुएंस ऑफ सेंटर। और अगर गवर्नर के ऊपर कंट्रोल है सेंटर का, so if center is controlling the governor or is able to influence the governor, then center will be able to influence the working of the state. Yes or no? Yes. Okay. Other than this, you can say that then there is Article 256 and Article 257. Here, under this article, center can issue direction, or you can say administrative direction to the states. Now these directions may include, or you can say including, the directions relating to maintenance. This is important. Maintenance of railway properties, and other means of communication. Okay. And if these directions are not followed, then what happens? Then center can dismiss the state government. Okay, for the reason under Article 365. ओके, समझ रहे हैं आप इस बात को? तो क्या ये भी एक सेंट्रलाइजिंग फीचर है? आप ये कह सकते हैं कि ये सेंट्रलाइजिंग फीचर मैं बोल रहा हूँ, एक यूनिटरी फीचर है। ये एक ऐसा फीचर है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी बनाता है ना? तो although there is federation, we have met all the criteria that have been enunciated by the experts to uh, to conclude whether any constitution is federal or not. We qualify for all in all those criteria, but even then, these are the provisions of the constitution which make Indian federation distinct, or you can say different from the constitution, the federal constitution that we have, for example, USA or Australia. Okay. Then there is a provision of all India services. Now here what happens? That is Article 312. It is related to Article 312. Under this, Raj Sabha, that is Raj Sabha can authorize here. It can authorize the Parliament to create one or more All India services. See, to create one or more All India services. All India services. Okay. And now you know that All India services जो होती हैं उनके ऑफिसर्स कौन अपॉइंट करता है? The officers of All India services are appointed by center. Okay. मतलब आपके यहाँ जो 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं, IAS हैं, IPS हैं और IFOS हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है? सेंटर अपॉइंट करता है। आप कहेंगे UPSC अपॉइंट नहीं करती। UPSC रिक्रूटमेंट की एजेंसी है, रिक्रूट करती है। अपॉइंट करना सेंटर का काम है।
और ना सिर्फ अपॉइंटमेंट, ये actually all the disciplinary control that is there, that is also exercised by center again, है ना? तो मतलब ये लार्जली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में फंक्शन करती हैं। जब आप आईएएस बनेंगे तो आप किसी स्टेट कैडर को ज्वाइन करेंगे, अभी तो मान लीजिए सर्कल्स हैं, लेकिन तब भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही काम होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में। अभी तो जोन्स हैं, लेकिन तब भी आप किसी स्टेट गवर्नमेंट में ही रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि इनका जो डिसिप्लिनरी कंट्रोल है वो भी सेंटर के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। जो इसमें जो अपॉइंटमेंट्स है वो भी सेंटर के द्वारा होती है। ओके, गेटिंग इट? सो दैट इज हैपनिंग अगेन, where by having the control over all India services, that is center by having the control over all India services, center this way also can control the states। ओके, जैसा हमने गवर्नर के केस में देखा था। ठीक है, अच्छा, अब अगर फिर से आप यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पास डुअल जुडिशरी है, and we have whole integrated judiciary that exists in form of pyramidal structure. At the apex of it is Supreme Court. Then there are high courts, but high courts are not of states, वो integrated judiciary का part है। तो आप कह सकते हैं कि constitution also does not provide for dual judiciary। ओके, ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स फॉर इंटीग्रेटेड सिंगल, यू कैन से सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी, जिसके अपेक्स में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। ये भी हमारे फेडरेशन को अलग डिस्टिंक्ट बनाता है जब आप कंपेयर करेंगे यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, स्पेशली यूएसए से। ओके, फिर आर्टिकल 324 है, और आप जानते हैं किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन। नाउ इन आवर केस वी हैव कॉमन इलेक्शन कमीशन। ओके, नाउ दैट होल्ड्स elections for parliament as well as state legislatures, okay, or state legislative assembly, that is the correct word here, state legislative assembly। समझ रहे हैं आप इस बात को? और जब हम पढ़ेंगे आप इलेक्शन कमीशन को तो आप देखेंगे कि इवन इन द कमीशन सेंटर हैज ग्रेटर से, ओके, इन कंपैरिजन टू स्टेट्स, लॉट मोर से। मतलब कि यहां भी जो है सेंटर की दखलंदाजी स्टेट्स कहीं ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट जिसमें आप बता सकते हैं कि योर फेडरेशन और द काइंड ऑफ फेडरेशन दैट इंडिया हैज इज डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट इज देयर इन यूएसए और अदर कंट्री, एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया। उसका एग्जांपल कैग भी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148। तो इसमें है क्या कि कैग एक्चुअली ऑडिट्स करता है रिपोर्ट्स को और अकाउंट्स को, आप कह सकते हैं। इट ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ यूनियन as well as states, okay, and he is appointed by the center, getting it? Now it is also removed by the central legislature, that is parliament, you can say here parliament। But many of the times states have been complaining or have complained that the office of CAG is misused. It is misused by the center. This has been the allegation of various states here in India. It has been misused by the center against the state. How? They say that it has been misused
against the center, against the states, for actually say for political reasons. So CAG has been used selectively against some states. That is the allegation of states for settling political scores. Okay. Now this actually does what? This this makes the center position of center dominating. Okay, so center comes to acquire the dominating role over the states here. Getting it? Now this dilutes what? Federal spirit. This dilutes the federal spirit of Indian polity. Okay. Now see that you have seen it in USA. And that Senate in USA has 100 members. Okay, 2 from each state. And Senate is the upper house there. So for example, in our case, upper house is Raj Sabha. So Senate in that sense is the equivalent to Raj Sabha. Now see what we have in India. In India, we have given unequal representation to states. In Raj Sabha. Okay. Now why it has come to be unequal? Because the number of seats there depends upon the population. So those states which are having less population are at loss. Okay. Now, not only that, out of 245 members, 12 are nominated by the president, and you know that by president it would essentially mean the government. So this also experts say that it dilutes the federal spirit. It dilutes this federal spirit. समझ रहे हैं आप इस बात को? So all the points that I have discussed, all the points that I just discussed, you can say that all these prove, or you can say this actually makes a case whereby we can say that although India is a federal country, okay, or you can say it is a federal polity, but in India there is a strong tilt, or you can say strong bias towards unitarianism. Okay. Or because of this reasons you can say that Indian federal model जो है, Indian federal model is different from USA or country like Australia. Okay. और इसी वजह से, इन सारी वजहों से, क्योंकि डिफरेंट है, ये अलग है, इसको क्या बोला जाता है? फेडरेशन स्वी जनरस. फेडरेशन स्वी जनरस. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इट्स ओन काइंड. Okay, federation of its own kind. You should remember that the word federation hasn't been used in the constitution. Okay, so in nowhere in the constitution you would find the word federation. Getting it? Now a question arises that why
why the word federation has not been used in our constitution. Now the case is that uh, your Supreme Court itself has declared federation to be one of the basic feature of the constitution, but without the word finding any mention in the document. Why so? ये अजीब नहीं है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक फीचर बोल दिया है उसका नाम भी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आप कह सकते हैं कि ऐसे दूसरे फीचर्स के साथ भी है, लेकिन फेडरेशन मतलब इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये साफ साफ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो भाई फेडरेशन भी हो सकता था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इफ यू गो back to this time where constitution makers were pondering over the structure of the government here, they uh, they were facing a situation whereby unity of states was of paramount importance. Okay, ये सबसे important चीज थी, unity of states. So this had to be kept in mind. Getting it? Now, what happens if constitution says it to be federal, or constitution declares India to be federal? Then in that case, what would happen? That the states would or could have become more proactive, or you can say could have become more assertive in demanding the autonomy. Okay, and that would have been or might turn out might have been disastrous considering the various tendencies, the secessionist tendencies that existed during the time of independence. Okay, but when constitution says that India is the union of states, then that in itself is a declaration that states cannot move away from the union. Okay, getting it? And that is why it is called that India is a indestructible union of destructible states, while USA is a indestructible union of indestructible states. Okay, in this context, it is opportune to quote Dr. Ambedkar here when he says that he says that rigidity, it is the statement that he made in the Constituent Assembly. Rigidity and legalism, these are the two most prominent, you can say, or the most serious weaknesses, according to Dr. Ambedkar, serious weaknesses of federation, or you can say federal system. That is a more correct word here. Federal system. Okay. And thus, for this reason, he avoided calling India as the federation of state and used the word union of states. Okay, rigidity, you already know that in Indian case would ask for the flexibility in the system so that it could adjust or accommodate the divergent trends that exist, or the streams, currents that exist, uh, which are of which are diverse and which are different nature. Okay, quantitatively, qualitatively, there are so different. India is so different. Okay, it is so unique. So many divergent currents exist simultaneously in India.
So any system which needs to function, or which could function in a sustainable way, or which is expected to function in a sustainable way, uh, yeah, should be flexible. Okay, we can't go for any. What is the meaning of legalism? Legalism means excessive adherence, or you can say excessive emphasis over law. लॉ रूल्स रेगुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस देना, बहुत ज्यादा चिपकना, ओके, उसको बोलते हैं लीगलिज्म। तो ये फेडरल सिस्टम की दो क्या है सीरियस कमियां होती हैं, और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि उन्होंने बजाय इंडिया को कहने के फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहना ज्यादा प्रेफर किया। ओके, एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स वेयर which is biased towards unitarianism, because in our system he went on to say that no state has got the autonomy to the level that it could secede from the union. Okay, so that is what Ambedkar had to say. Or he again went on to say that India is a one country made up of states, but no states has got enough autonomy to move away or break away from the union. So this is what Ambedkar said when he was explaining why he used the expression union of states instead of federation of states. Okay, so this was all about all the basic concepts that needed to be taught, and now in the next part we are going to start with preamble. Okay, real polity. So this first part of the marathon session was all about the basic concepts, although there are other basic concepts also, but now we are starting the polity, जहां से आपकी टेक्स्ट बुक शुरू होती है, preamble से हम शुरू करते हैं. Okay, so thank you. It was pleasure to teach you the polity here, and अगर आप बेनिफिट हो रहे हैं तो डोंट मिस द अदर पार्ट ऑफ द सीरीज. ओके, थैंक यू. आपको बेनिफिट मिल रहा है तो देखिए दूसरे पार्ट्स भी, और आपको बहुत अच्छे से, बहुत डीपली आपकी पॉलिटी कवर अच्छे से पढ़ाई जाएगी. ओके, इफ यू प्लान टू सब्सक्राइब एनी कोर्स ऑन Unacademy, don't forget to apply the code to avail 10% discount here. Okay, use this code, you will get 10% discount. Thank you very much.